Active, right? But thyroxine is less active compared to T3 is less active compared to T4. But it is not that it is inactive. But because T3 is faster acting, T4 undergoes deiodination to form T3. But T4 is not exactly inactive. अब कुछ cells के अंदर T4 ही act करता है, slow action होता है. That you will learn later. Oh. Hi, Hetvi. So both C and D can be the answer in this question, right? नहीं बेटा, so C is the answer. Incorrect है ना? Hormones तो normally active ही होते हैं ना? So isn't D incorrect? It's mentioned inactive. Mentioned inactive. So then D would be the answer, right? Hormones are produced in inactive forms. Sorry. Yeah, so that's also correct. Yeah, good. जिसने भी ये किया था, I didn't read that. Excellent. Thank you. Yeah, so C and D both are correct. Good. जिसने भी दिया था, had you all thought about it? Okay. Anyway, good. Fine. Yes, Vedika. So, you know, in like the MTG, before they have a little summary of the chapter, over there it's written hormones are produced in inactive forms called prohormones, like proinsulin for insulin. So, do we not? नहीं बेटा, जो सेल से निकल जाता है ना, that is always a hormone. Okay, now maybe the one who had made this question, आपके बीटा सेल के अंदर you have a chemical called as proinsulin, जिसके अंदर you have something called A chain, something called B chain and something called C chain. इसके अंदर 35 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसके अंदर 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं and C chain के अंदर 28 अमाइनो एसिड्स होते हैं. That's okay, fine. But ये तीन अलग-अलग जीन्स, ध्यान से, this is just for knowledge, ये तीन अलग-अलग जीन से बनते हैं. So एक जीन से बनता है A chain, दूसरे जीन से बनता है B chain और तीसरे चेन से बनता है C chain. And this is just for knowledge, C chain का काम है A और B chain के साथ वो चिपक जाता है. So it forms a peptide bond between the A chain and the C chain. 35th अमाइनो एसिड और यहाँ के फर्स्ट अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और यहाँ के 28th अमाइनो एसिड एंड फर्स्ट अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. So A, C and B become coordinated. They become a straight line. And that is called as pre-proinsulin. बाद में उसमें से C chain निकाल देते हैं और C chain निकल जाता है, that is now called proinsulin. And C chain निकालने के बाद अब A chain और B chain के बीच में कनेक्शन कौन करेगा? C chain था ना कनेक्टर. So now who will do the connection between A chain and B chain? Think. You'll know it, all of you. Okay, Satvik always has the answer. Bolo beta. So no, I raised my hand for a doubt. I guess hydrogen bonds maybe. Now, come on guys, fast. Which bonds connect protein chains? Biochemistry. Peptide bond. Sorry? Peptide bond. Peptide bond beta is between amino acids. H2S bonds. अमाइनो एसिड प्राइमरी फॉर्म से सेकेंडरी फॉर्म बन जाएगा, बीटा हेलिक्स, बीटा प्लेट्स, Hydrogen टर्शियरी. Hydrogen sulfide. Exactly, if you've heard of it, hydrogen sulfide, disulfide bonds बनते हैं ना, याद है कि नहीं all of you all? तो protein chains are connected by disulfide bonds. Now, just the logic, जब A chain बना एक जीन से, जब C chain बना दूसरे जीन से एंड जब B chain बना थर्ड जीन से, तो यहां तो अभी तक सिर्फ अमाइनो एसिड का
अल्फा बीटा हेलिक्सेस बन रहा है. So they have not yet become connected to each other in the form of disulfide bond. इसलिए A, C और B बनते हैं. That is preproinsulin. फिर उसका बन जाता है proinsulin. और proinsulin is by removal of C. Then A and B in the meantime starts forming disulfide bonds. तो C ने क्या किया? जब तक डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है ए और बी के बीच में, तब तक सी चेन उनको पकड़ के रखता है. और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, अब सी का कोई काम नहीं है, वो निकल जाता है. एंड दैट इज नाउ कॉल्ड एज इंसुलिन. तो वैदिका जो बोल रही थी कि सबसे पहले क्या बनता है? प्री-प्रो इंसुलिन, विच इज ABC. बाद में बनता है प्रो इंसुलिन, विच इज ओनली A एंड B. एंड देन इंसुलिन जब ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं. बट ये इनएक्टिव विद इन द बीटा सेल है. जब वो रिलीज होगा, इट इज नेवर रिलीज्ड एज प्रो इंसुलिन. इट इज रिलीज्ड एज ऑलवेज मैच्योर इंसुलिन, फुल्ली फॉर्म्ड इंसुलिन. बट एंजाइम बेटा पेप्सिनोजन इज रिलीज्ड बाय द चीफ सेल. ट्रिप्सिनोजन इज रिलीज्ड बाय योर पैंक्रियाटिक एसिनर सेल. और बाद में वो HCl से ट्रिप्सिन में बनता है. बाद में वो एंटीरोकाइनेज से ट्रिप्सिनोजन becomes trypsin. I'm sure we remember all of you. तो वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो सकता है. याद है all of you? And why should it be secreted in inactive form? Because if it is released in active form, these are proteolytic enzymes which will start digesting the muscles of the stomach wall, intestinal wall itself. तो हार्मोन्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एंजाइम्स बड़े अमाउंट्स में रिलीज होते हैं. हार्मोन्स एकदम छोटे छोटे माइक्रोग्राम्स में रिलीज होते हैं. ओके, Vedika, got it, beta? Yes, sir. So that's the logic. Yes, Atvik. Sure. So, but it's given that produced in inactive form, right? Which is correct. They're secreted in active form, but they're produced inside the cell in inactive form, which is No, from within the cell. From within the cell. Yes, but produced is not same as secreted, right? Like it's equal to synthesized and it's not secreted. Basically, it's kind of correct. So the D1 remains correct only. Yeah, so only C will be the answer. Okay. It's not like released or Yeah, the secreted. word produced. Okay, fair enough. क्या बात है? Excellent. Fine. Thank you. So somebody made me understand about D and somebody made me understand about why D is incorrect. Very nice. Good. And then enzymes, vitamins, and hormones are classified into a single category of biochemicals because they all help in regulating metabolism. ये NCERT statement है, याद रखना. Enzymes control metabolism, vitamins and hormones. Chalo, very quickly, fata. Which enzyme control metabolism? Quick. Pyroxine. Enzyme, beta. Bile. As a matter of fact, all digestive juices, na, जितने भी आपके enzymes है, they are helping in metabolic activity. Say carbonic anhydrase in RBC is helping in the formation of sodium bicarbonate. I mean, वो सब metabolic activities है. So enzymes, वो तो किया है आपने biochemistry में, control a lot of metabolic activities. आपके जितने भी ligases है, hydrolases है, catalases है, नाम से मालूम पड़ रहा है ना, catalase help in catabolism. Catalase help in catabolism. So in other words, they help in metabolic activity. Vitamin, which vitamin helps in metabolism? Quick. So B. Vitamin, say to start with, आपको आता है vitamin D. Vitamin D helps in what does vitamin D do? फटाफट. Absorb calcium from the intestine. Absorb calcium from the intestine, will increase blood calcium level. याद है कि नहीं all of you? So that means वो calcium metabolism को control करता है. And hormones. Hormones of course कितने सारे metabolic activity है. Thyroxine is controlling basal metabolic rate, etc. Insulin, gluconeogenesis or other glucogenesis, glucagon, glycogenolysis. So these are metabolic activities. Clear all of you? Just the examples. So enzymes,
Metabolism, vitamins, hormones, all are metabolic. Then, which of the following statements is correct? Endocrine glands regulate neural activity and nervous system regulates endocrine gland. ये तो सबको आता है. Nervous system regulates endocrine gland. फटाफट. Which one? Hypothalamus. Hypothalamus. Hypothalamus is a part of the nervous system. Brain का part है. Pituitary brain का part है. उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं. बाय द वे, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज मेड अप ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन टिश्यू, सो इट इज कंट्रोलिंग thyroid gland, etc., everything. Any clear simple example for your Adrenal gland. sympathetic nerves. Have you done autonomic nervous system? हो गया अभी? Yes. Yes, sir. तो आपको आता है अभी. Sympathetic nerves act on your adrenal medulla and help in the release of adrenaline. And adrenaline will now help in flight, fright, fight mechanism, जो हमने hormones में पढ़ा. And that is the reason sympathetic nerves are your flight, fright, fight nerves. So again, autonomic nervous system. Autonomic nervous system controls your endocrine system, that is release of adrenaline hormone. And ulta, endocrine glands control neural activity. Anybody can explain this? Melatonin. How does melatonin regulate neural activity? RS. Inactivation of RS. Suppresses the RS. Sorry, beta? Suppresses the Inhibition of RS. RS. Suppression of RAS. क्या बात है, you all remember. Nice. याद है कि नहीं बेटा? रात को जब आप सोते हो तो आपके पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन एक्ट्स ऑन योर ब्रेन स्टेम, और उसके अंदर याद है रेटिकुलर फॉर्मेशन है. नाउ यू हैव डन इट. तब नहीं किया था. एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके ब्रेन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है. दैट इज योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलर डीएक्टिवेटिंग सिस्टम. एंड मेलाटोनिन विल एक्ट ऑन द रेटिकुलर फॉर्मेशन and inhibit messages to your general motor area, premotor area, sensory area, and your brain is switched off. You go to sleep. So melatonin आपके nervous system brain को switch off करता है. Excellent. तो ये याद रखना. And बहुत सारे examples हैं. Sir, even serotonin is the example. Example, correct. How does serotonin do better? What does serotonin Neurotransmitter. Short-term memory into long-term memory. Converts short-term memory into long-term memory. याद है बेटा? Yes, sir. All of you. And anything else serotonin does? ये तो मैंने सिखाया है आपको. It is a neurotransmitter. It's a neurotransmitter. Happy अच्छा. hormone. Which neural activity does it control? Serotonin. Quick, हाँ, फटाफट बोलो. ये सब ऐसे ही knowledge के लिए है. फटाफट. याद है मैंने बहुत टाइम पहले सिखाया था आपके आपके हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन में. There is Gastric something motility. called as Increases the yes, Talakshi, somebody who said It increases the gastric motility, no? excellent. याद है there is something called Meissner's plexus and Orbach plexus. Anybody remembers that? Yes, so you had mentioned them. Both these. तो बेटा होता क्या है आपका Orbach and Meissner's plexuses ना are basically sympathetic and parasympathetic nerves, उसके branches हैं. And उसमें Meissner's helps in release of all the hormones. So it's intestine है तो gastrin, cholecystokinin, etc. And Orbach controls, I hope you all remember, I think I told you all, it controls the muscularis layer. और muscularis layer में याद है you have longitudinal, circular, smooth muscles, longitudinal, circular and oblique muscles in stomach, and longitudinal, circular muscles in intestine. और वो Orbach plexus उसको stimulate करता है and these muscles contract, जिससे होता है peristalsis. And which hormone stimulates your Orbach plexus?
what Palakshi just said. Serotonin. Now, ye thik tha. Now I'm asking you a question which has been asked in the NEET exam before. Who secretes that serotonin within the intestine? Argentafin. Excellent. याद है all of you all? Argentafin cells. और ये तो है आपको, ये नीट में आया है, though now it is not there in the NCERT. Argentafin cells secrete serotonin within the stomach. तो आपके ब्रेन के अंदर pineal gland से serotonin आता है और वो आपके मूड को रेगुलेट करता है by acting on limbic system, emotional area, and makes you happy hormone. And serotonin in the intestine, given by argentafin cell, will stimulate your Auerbach and Meissner's plexuses, which are your sympathetic parasympathetic nerves, and stimulate peristalsis to take place in your intestine. So, bahut sare. Anyway, these are just nice points for you to remember. And then MSH is secreted by middle lobe of pituitary. Now, somebody had asked anterior lobe of pituitary. Is it anterior lobe, beta? Anterior lobe by your NCERT. What is the anterior lobe strictly defined as? Pars distalis. Pars distalis is called as anterior pituitary. Pars distalis is your anterior pituitary. So pars intermedia is not anterior pituitary. Pars intermedia is not anterior pituitary, and which means that MSH is given by pars intermedia, which is not a part of anterior pituitary. So it is middle lobe. Yeah. And then pituitary are under control of hypothalamus. Yeah, ये बहुत ज्यादा है आपके लेवल पे. Nevertheless, sorry. All of y'all, if y'all remember, I told y'all to draw the diagram. I hope y'all remember. Diagram draw किया था आपने pituitary gland का. किसी को याद है? Yes, sir. Yes. We had that word pituitary sites over there. So they're the neuroglial cells. Very nice. I hope y'all remember, all of y'all. Yeah, very good. तो ये diagram याद है all of y'all? Had you all drawn it, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Everybody. तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. उसके अंदर जो आपका पार्स नर्वोसा है उसमें होते हैं पिट्यूइसाइट्स. And as somebody rightly said, ये जो पिट्यूइसाइट्स है, they are types of neuroglial cells. तो ये न्यूरॉन्स नहीं है, ये न्यूरोग्लियल सेल्स है that support your neurons. तो आपके सुपराऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स को, उसके एक्सॉन्स को ये पिट्यूइसाइट्स सपोर्ट करते हैं. And these are, I hope you'll have learned, the star-shaped pituitarites, star-shaped neuroglial cells. ये तो आपने किया है structure of cells, that's not the structure of tissues, tissue histology. Sir, what are the star-shaped neuroglial cells called? Astrocytes. Excellent. I hope you remember astrocytes. तो जो लंबे लंबे होते हैं, if you remember, they are oligodendrocytes. वो oligodendrocytes होते हैं. और जो स्टार शेप वाले होते हैं वो astrocytes होते हैं. उसमें बेटा जो oligodendrocytes होते हैं ना, they are for mechanical support. Oligodendrocytes mechanical support के लिए होते हैं ताकि न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और उनका जो डेंड्रॉन और एक्सॉन के बीच का साइनैप्स है वो साइनैप्स टूटना नहीं चाहिए. If you remember, the electrochemical gradient is through the synapses. So for axon and dendron to maintain a connection with each other, to form the synapse, there is support given to the axons by oligodendrocytes.
and astrocytes always control secretions of the neuron. तो एक समझो रेगुलर न्यूरॉन है ना बेटा, ये रेगुलर न्यूरॉन है, तो उसका जो डेंड्रॉन है और उसका जो पोस्ट साइनेप्टिक उसका जो एक्सोनल एंड है और उसका पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्रॉन है, तो सर इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ये एक्सोनल बल्ब्स है, टीलोडेंड्रॉन्स, और टीलोडेंड्रॉन्स के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, एंड ये है आपका एक्सॉन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्रॉन, और यहां आपके वेसिकल्स रिलीज करेंगे कौन सा केमिकल? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिलीज करना है, and acetylcholine will go and stimulate the receptors, and receptors will start now under action of acetylcholine start converting again chemical into electrical impulses, and that is the reason it is called electrochemical. All of you remember na, ye to aapko sikhaya gaya tha, Vishal sir just taught you in nerves. Now sir, beautiful question, how does the electrical activity stimulate vesicles to then merge with the axonal membrane and then release acetylcholine? ये कभी सोचा है किसी ने? You all know electrical impulse आएगा, यहां से straight away आपका vesicle stimulate होगा और वो acetylcholine release करेगा. Sir, can an electrical stimulus stimulate a chemical-filled vesicle to release acetylcholine? एक मिनट, समझ में आ रहा है या हेवी जा रहा है? Otherwise, I'll very just quickly go through everything. तुम लोगों को समझ रहा है या go fast? Maybe potassium ions get attached to it, to the vesicles. Very nice. Sir, do you all remember? It will be the attachment of potassium ions to these vesicle, potassium and sodium ions. Yeah, the sodium potassium pumping. आपके nodes of Ranvier में sodium potassium आया था, depolarization, repolarization. ये तो आपको आता है ना all of you? Yes, sir. And ये आपके जो vesicles है, उसके अंदर भी there are gates, which are called ligand gates, ligand protein gates. और उसके अंदर भी sodium potassium exchange होता है, which will stimulate the vesicle to rupture, and वो sodium potassium gate को stimulate कौन करेगा? The stimulation is done by astrocytes. तो astrocyte हमेशा एक vesicle को stimulate कराता है by opening sodium potassium gates and helping in the release of the neurotransmitter inside. तो नॉर्मली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आता है? You all know acetylcholine. Similarly, if it is pineal gland, तो melatonin. If it or serotonin or have you done? अच्छा ये आपको नहीं होगा ना? अच्छा, but you all अच्छा है तो NCERT में दिया है ना? I think. Sir, which part of the brain produces dopamine? Is there in the NCERT? Anybody? Dopamine कौन देता है? I think it was there, ना? नहीं है तुम लोग के NCERT? Of course, you all must be knowing. I thought it was there. Anyway, you remember substantia nigra? ऐसा कुछ दिया है NCERT में? Substantia nigra. अच्छा, sorry. It's a brain part. उसमें से release होता है dopamine. जो आपका concentration बढ़ाता है, memory बढ़ाता है, याद है ना? जो reward hormone, I think I told you all. तो अलग-अलग neurons में से, ध्यान से, हाँ, अलग-अलग neurons के axonal bulbs, they give out acetylcholine, or they give out melatonin, or they give out serotonin, or they give out dopamine, like neurons within substantia nigra. लेकिन इनको stimulate कौन करेगा? Who will stimulate the vesicles to give out all these neurotransmitters? It is done by astrocytes. अब तो याद रखना, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कौन होते हैं?
oligodendrocytes. और release of their neurotransmitters कौन करेगा? Astrocytes. और by the way, हमने अभी भी mention किया है कि pituitary are star-shaped astrocytes in the pars nervosa. So it will stimulate, and you all know it, supraoptic nucleus के vesicles को stimulate करेगा to release ADH whenever there is a deficiency of water in the body for reabsorption of water retention. And it will also stimulate, pituitary stimulate paraventricular nucleus for release of, release of oxytocin. And that will help it, say, fertilization to take place, or parturition to take place, or milk ejection to take place. So ये सारे neurotransmitters का release किया जाता है with the help of astrocytes. In case of brain, it is the pituitary. Pars nervosa में pituitary. और इनको control कौन करता है? Everything is controlled by your hypothalamus. याद है पूरा pituitary gland hypothalamus के control में होता है. तो चलो, just a beautiful logic. ये तो आपको पूछेगा नहीं कोई. So anyway, this question is given, so we have solved it. And then, which hormone stimulates secretion of milk from the female? Of course, you all know prolactin. Prolactin helps in milk secretion. Somebody had asked oxytocin. No, beta, oxytocin does not help in secretion. Oxytocin helps in ejection of milk or release of milk. तो आपके alveoli को stimulate करता है prolactin, and it helps in secretion of milk. Milk बनाता है, secrete यानी milk बनाता है. Then that milk goes into mammary tubules and then into mammary duct, और mammary duct में याद है there is ampulla, और ampulla में दूध store हो जाता है. Then वो oxytocin जब बच्चा nipple को stimulate करता है, then that will help in the release of oxytocin from the mother's pituitary gland, and oxytocin will make the ampulla contract and will help in the ejection of milk. So who helps in secretion of milk? That is done by prolactin. And who helps in ejection or release of milk? Oxytocin. और बहुत सारे स्टूडेंट्स हाथ ऊपर कर रहे हैं. अच्छा, कुछ एनसीईआरटी में कॉन्ट्राडिक्टरी दिया है. रियांश बोल, तू तो एनसीईआरटी का चैंपियन है. So NCERT mentions progesterone also as milk secretion. So even you had told us that it's prolactin and progesterone. हाँ, exactly. You remember वो दिया है ना एनसीईआरटी में. Okay, somebody had asked me oxytocin as the option. Okay, so you all have it out progesterone. Correct. And I think I told you all also in the lecture कि आपके एनसीईआरटी में दोनों दिया है, prolactin also and progesterone also. If it is given both progesterone and prolactin, mark both. Okay, दोनों एनसीईआरटी में दिए हैं. But if they are given as individual options, then go for prolactin, because medically this is the correct answer. Progesterone actually सिर्फ milk apparatus बनाता है, वो milk secretion और उसमें तो milk ejaculation भी दिया है progesterone का function, which actually is not a function of progesterone. Progesterone only helps in alveoli and milk apparatus formation at puberty. Production, that is secretion, is done by prolactin, and ejection is done by oxytocin. So yeah, all of you understood? If both are given, then both. If both are not given, then only prolactin. Yeah. Anika? Sir, actually NCERT says that milk formation is done by prolactin and milk secretion is done by progesterone. वो same है. What sort of English words? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Sure. Then the function of the pineal body is lightening of skin, regulation of period of puberty, and sexual behavior control. NCERT statement answered all of these. इसमें क्या doubt था? Yes, Rita. So how does it control sexual behavior? Sorry, I didn't get you, beta. So how does it control sexual behavior?
ये मैंने बताया नहीं था आपको. अच्छा, all right. Anyway, how does it control sexual behavior? किसी को याद है all of y'all? I think I told you all. I think I told you all. Sorry, it acts on limbic system. It acts on limbic system. Melatonin limbic system पे act करेगा बेटा? नहीं सर, pineal body दिया है ना, तो serotonin भी ले सकते हैं. नहीं बेटा, serotonin limbic system से अच्छा, for emotion control. Okay, so the question is pineal ना? Question में क्या दिया है? हाँ, pineal. Okay, and anything else which is a direct action on reproduction? I think hadn't I told you all? I thought I had told you all. Anyway, आप लिख लो इसे. This is because it's given in the NCERT. Yeah, just याद रखना, everything is written over here. So how does pineal gland control metabolism? वो lipolysis बढ़ाता है. So it controls metabolism. It helps in lipolysis, which will increase your blood sugar level. Lipids will get converted into glucose and will help in increasing glucose level. So it controls metabolism. How does it control defense capacity? It will help in production of macrophages, neutrophils and monocytes, and natural killer cell. वो killer cell attaches to a microorganism, उसमें से perforin release होता है, उससे holes बनते हैं microbe के cell में, और वो मर जाता है. भूल गए तुम लोग? याद है all of y'all or forgot? Anyway, so it helps in defense capacity. It helps in forming neutrophils, monocytes, and natural killer cells. And it will affect what Ruta was asking, menstrual cycle. In other words, reproduction. How does it control reproduction? Please remember, melatonin will decrease FSH and LH. And that means it will not allow ovulation to take place. So ovulation nahi ho paega, and that is the way it will prevent the menstrual cycle. And it controls pigmentation. It makes your skin color light. Melatonin क्या करेगा? वो आपकी skin में याद है melanocytes होते हैं, and याद है melanocytes are stimulated by ECTH. Which sorry by the NCERT, MSH. So MSH stimulates melanocyte to release melanin and controls pigmentation. Melatonin उल्टा करता है. वो है ना MSH का उल्टा है. वो मेलानिन को melanocyte में जमा कर देता है and does not allow the release of melanin. तो मेलानिन रिलीज नहीं होगा, जिससे स्किन लाइट हो जाएगी. एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेम मेलाटोनिन. अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, मेलाटोनिन का मतलब है स्किन वाइटनिंग. सो दैट इज एक्चुअली द वे साइंटिस्ट हैड नेम्ड द हार्मोन मेलाटोनिन. द हार्मोन व्हिच लाइटन्स द स्किन is called as melatonin, skin whitening hormone, and वो आपका pigmentation light कर देता है. ये समझ में आया इतना? Now just in case I can ask you all, sir, humans में melatonin basically sleep and wake के लिए है. It is in amphibians where it controls sleep and wake, and it controls body temperature. If you remember, it will decrease body temperature. It will help in lipolysis. It will help in making skin color light. It will prevent the release of FSH, LH,
and will help in defense capability. When is melatonin released maximum in case of that frog? Rainy season. Hibernation. Not rainy season. Ulta. In case of hibernation, which is winter sleep, or estivation, which is summer sleep. अभी वो 6 महीने तक 4-5 महीने तक फ्रॉग जमीन के नीचे सॉइल में सो रहा है, and MSH will be given out. Sorry, melatonin will be given out. And melatonin क्या करेगा? उसके स्लीप को लंबा करेगा, महीनों तक वो सोता रहेगा और उसका बॉडी टेम्परेचर लो रखेगा. बॉडी टेम्परेचर लो रखेगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा. तो अच्छा है ना, बॉडी में ज्यादा हीट नहीं बनेगी. एंड लाइपोलाइसिस करेगा. अभी वो खा तो कुछ नहीं रहा है ना, फ्रॉग तो सो रहा है जमीन के नीचे, तो उसके हार्ट बीट के लिए एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी कौन बनाएगा? बॉडी में जो लिपिड्स थे ना, वो लिपिड्स शुगर में बनते हैं, एंड वो शुगर बाद में एनर्जी एटीपी बनता है बाय सेल्युलर रेस्पिरेशन, and that ATP helps in the heart to keep on beating while the frog is sleeping for 3-4 months. And so in what form is energy available? In the form of sugar by the breakdown of lipids जो frog के body में है. So melatonin will control lipolysis and it will cause FSH LH to decrease. क्यों sir? अभी frog अगर सो रहा है, why should there be release of egg? ओव्यूलेशन क्यों आना चाहिए? अननेसेसरी ओवरी खाली हो जाएगी. तो यू डोंट नीड एग्स ना, इट इज स्लीपिंग. यहाँ तो रिप्रोड्यूस नहीं करने वाला है. तो मेलाटोनिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद कर देगा, विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन. एंड सर दैट इज ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ मेलाटोनिन एक्चुअली, एंड इट विल कॉज लाइटनिंग ऑफ द स्किन कलर. सर अभी फ्रॉग नीचे स्किन जमीन में है, why should it spend energy for making the skin darker? Sir, आपको मेलानिन किस चीज के लिए चाहिए? We all know melanin is to reflect away ultraviolet light, UV rays. So melanin protects you against skin cancer. तो अगर फ्रॉग जमीन के नीचे है तो उसको सर कोई लाइट तो आने वाली नहीं है, उसके स्किन को अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं आने वाली है, तो the amount of pigmentation is reduced. And how? Sir, melatonin decreases melanin release, prevents pigmentation. And that is the reason we remember it is called skin whitening hormone. Melatonin, skin whitening. Are you getting it all of here? So these are the logistics of what is given in the NCERT: sleep wake cycle, body temperature, metabolism, pigmentation, more so in case of amphibians when they are into estivation and hibernation. Yeah. Yes, Vita. But how it increases behavior? I couldn't hear you, Beta. So how does it control sexual behavior, like ovulation and sexual behavior? हाँ, चलो तू ही बोल मुझे, how does it control sexual behavior? Who controls sexual behavior, Vita? Estrogen, Estrogen. And males में who controls it? testosterone. Testosterone. Which hormone regulates the release of estrogen? FSH. Who regulates spermatogenesis and spermiogenesis in males? Testosterone production in males? LH, ICSH. And what has melatonin done? It has decreased FSH, LH. No FSH, no estrogen. No LH, no testosterone. And testosterone नहीं है तो लिम्बिक सिस्टम पे, लिबिडो सेंटर पे कोई एक्शन नहीं होगा. एंड ईस्ट्रोजन नहीं है तो लिम्बिक सिस्टम पे फीमेल का सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं होगा. बराबर है. Why should the female and male be sexually excited? They are anyway in the estivation hibernation phase. And what will immediately happen once the sleep wake cycle is over? जैसे ही sleep melatonin ने किया, and melatonin ही under control of hypothalamus wake करा देगा. तो
just beautiful. Huh? You do veterinary sciences, you will learn. ये तो आपको एनसीईआरटी में ये नोट्स में दिया है. Hypothalamus is your biological clock. Is that word given? Yes. दिया है ये word. So your hypothalamus is a biological clock. It is calculating every second, minute, and hour, and year, and day of your life. तो hypothalamus को मालूम है. Hypothalamus को मालूम है आप प्यूबर्टी में आ गए हो, 12-14 साल के हो गए हो, and biological clock calculates it. Okay, now you have reached puberty. Now it will start giving, I hope you all remember, gonadotropin releasing hormone जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, and उससे बनेगा gonadotropin FSH LH. समझ में आ रहा है all of y'all? And that will then help in you to become fertile. Means you will start becoming fertile. Ovulation, that is oogenesis, spermatogenesis start हो जाएगा. So hypothalamus is your biological clock. So similarly, ये amphibian में hypothalamus is helping in the pineal gland to release melatonin. And melatonin कब high होगा? समर में और विंटर में एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम, और फ्रॉक सोता रहेगा. और बाद में हाइपोथैलेमस ही कैलकुलेट कर रहा है कि अब रेनी सीजन आने वाली है. रेनी सीजन आने वाली है तो बहुत पानी रहने वाला है, बहुत पानी रहने वाला है, एंड वो मेलाटोनिन रिलीज बंद करवा देगा. मेलाटोनिन कम तो याद है स्लीप की जगह वेक, स्लीप की जगह वेक हो जाएगा, एंड वेक हो जाएगा. So now what will happen? Weak हो जाएगा means now the male and female frog will now start becoming active. वो awake हो जाएंगे. And by the way, who can answer this? What will hypothalamus now start giving a lot of in the wake phase? TSH, RH. And what will pituitary start giving a lot of? TSH. So what will thyroid gland give out a lot of? Thyroxine. And what will thyroxine do in the frog? Increases basal metabolic rate. BMR बढ़ जाएगा. Metabolically active हो जाएगा. And now, very important, melatonin कम हो गया. Melatonin कम हो गया. Melatonin क्या कर रहा था? Melatonin FSH LH को कम कर रहा था. और अब अगर melatonin कम हो गया means the inhibitory action is gone, and now FSH and LH levels will increase. And FSH LH बढ़ेगा, that means ovulation होगा. तो आपका rainy season में the female frog starts laying lot of eggs, and males में spermatogenesis होगा, बहुत सारे sperm release किए जाएंगे. And by the way, FSH की वजह से estrogen बढ़ेगा, LH की वजह से testosterone बढ़ेगा, limbic system stimulate होगी, जो रुता का क्वेश्चन था, and they become sexually active. And now the male and female frog become sexually active, and they go into that water, and you all will learn it now. Arif will teach you in Kingdom Animalia. Has it started? No. So nevertheless, so now they start giving out eggs and sperms in the water, and starts doing external fertilization in the water, जिसके अंदर से आगे जाके टैडपोल बनेंगे और उसका फिर मैचुरेशन से नए नए फॉर्म बनेंगे. Getting it, all of y'all? समझ में आ रहा है all of y'all? तो चलो, anyway, just for fun, that's okay, simple. All right. Okay. So please remember, it controls sexual behavior. Why? Because it decreases, pineal gives out melatonin, melatonin decreases FSH-LH and prevents estrogen progesterone, means libido कम हो जाएगा. और melatonin जब कम हो जाएगा तो FSH-LH बढ़ जाएगा, तो जिससे और estrogen progesterone रिलीज होगा, and it will increase libido or sexual behavior. Rita, clear? Yes. Yeah. Sure. Then, which one of the following endocrine gland stores its secretion in extracellular space before discharging it into the blood? बेटा ये तो किया था ना, thyroid.
याद है थायराइड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर आपका T3 और T4 सॉरी TSH helps in release of thyroglobulin. याद है all of y'all? Yes. Yes, sir. बाबा याद है TSH stimulates your cells जिसके अंदर टायरोसिन की चेन्स बनती है. आपके क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर टायरोसिन की चेन बनती है. टायरोसिन चेन्स आर कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन एंड वो थायरोग्लोबुलिन जाता है आपके कोलॉइड के अंदर. होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू ऑल. ये तो किया ना बेटा. Yes, sir. हाँ आपके कोलॉइड में. हे भगवान. अच्छा सॉरी लेट मी नाउ लर्न दिस. यार तुम लोग मुझे सिखाओ ना यार. 6 तो हाँ याद है ये आपका कोलॉइड है और कोलॉइड में आ गया थायरोग्लोबुलिन. आई टॉट यू ऑल दिस गाइस everybody. Yes. And what is that thyroglobulin made up of? Tyrosines. And then you remember आपने iodized salt खाया. Iodized salt से आपके blood capillary में iodine गया, फिर वो आपके cuboidal cell में गया, बाद में colloid में गया. And colloid के अंदर iodine combines with tyrosine to form monoiodotyrosine, diiodotyrosine, which then couples to form T3 and T4. MIT-DIT, mono, di, tri. And 2 DITs, tetra, 4. And that, where is it produced? In the cell? No, in the colloid. याद है कि नहीं all of you? तो T3, T4 कहाँ बना बेटा? Colloid में. सेल के अंदर नहीं बना. सेल के अंदर नहीं बना. सेल में तो थायरोग्लोबुलिन बना था. फिर वो गया colloid के अंदर और उसके अंदर आयोडीन आने से MIT-DIT बने जिसके कपलिंग से बना T3 and T4. And where are these T3, T4 stored? In the colloid they are stored. So is it stored intracellular or extracellular? Extracellular. Extracellular. So it is stored extracellular. And that means it is storing its secretion in extracellular space. वहां लिख लो colloid. Inside follicles. T3, T4 stored in colloid inside follicles, which is extracellular. फटाफट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो in case you all want to. This is the follicle and this is your colloid. Extracellular. हाँ Tarini, quickly बेटा. Sir, thyroglobulin is made in the cuboidal cells and is stored in the colloid. Correct, बेटा. And for T3, T4, they are made and stored in the colloid. Correct. Absolutely correct. Yes. Then a person is having problem with calcium and phosphorus metabolism. Which of the following glands is not functioning? Parathyroid. Sir, you remember now, parathyroid will give out parathyroid hormone, Colles hormone, and whenever you have low calcium, hypocalcemia, then parathormone will help in reabsorption of calcium phosphate from the bone. Not just calcium, bones mein in what form is calcium stored? You cannot have Ca++ stored in the bones, na? It has to be in the form of a proper salt. तो कौन से फॉर्म में आपके बोन्स में कैल्शियम स्टोर किया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. एंड आपका पीसीटी एक्ट करता है और आपके ऑस्टियोसाइट्स के अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट है, पीसीटी स्टिमुलेट्स, चलो वेरी क्विकली, विच सेल्स टू ब्रेक डाउन ऑस्टियोसाइट्स? Osteoclast. So PCT stimulates osteoclast और osteoclast stimulate होके जैसे osteocyte तोड़ा जाएगा और osteocyte के टूटने से कैल्शियम फॉस्फेट रिलीज होगा और आपका ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा. And that means PTH, Colles hormone,
causes hypercalcemia. It increases blood calcium. अगर calcium low रहेगा तो याद है, it causes tetany. आपके muscle spasm में चले जाएंगे, याद है, ऐसे दिखाया था मैंने. All of you. So that is called parathyroid tetany. And उसको prevent करने के लिए आपका calcium बढ़ाना पड़ता है, for which calcium phosphate absorb किया जाता है, causes hypercalcemia. Everybody clear? And what else does PTH do? Reabsorbs calcium from urine. Urine में से calcium reabsorb करेगा. याद है all of you? From the PCT. And anywhere else calcium is reabsorbed quickly. Intestine. No, Palakshi. Palakshi knows, I know. Somebody else. Digested food. Nice. Intestine. PTH stimulates what, beta? Quick. Kidneys. Calcium. सात्विक बोल, तेरे को तो आता है सब. हाँ, जल्दी बोल. Kidney, renal tubule. It helps in calcium reabsorption from the urine. Sorry. Helps in Calcium reabsorption from the urine. Parathyroid hormone. active absorption of urine. Sir, calcium reabsorption from urine. हाँ, वो तो मैंने बोला ऑलरेडी. वो पीसीटी पे एक्ट करेगा और वहां से यूरिन एब्जॉर्ब, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. तो अब वापस आपका ब्लड कैल्शियम बढ़ेगा, तो बोन में से कैल्शियम आएगा और पीसीटी में से कैल्शियम आएगा, एंड ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और टेटनी प्रिवेंट हो जाएगा. और क्या करेगा पीटीएच? ये तो आपको है एनसीईआरटी में. हाँ साक्षी. Or in the intestine, it will reabsorb calcium because Excellent. Very good. I hope you remember PTH will act on it will act on PCT cell, and PCT cell will help in the conversion of now you say Palakshi, I know you know this. Calcidiol to calcitriol. Wonderful. Yeah, inactive vitamin D to active vitamin D. That is calcitriol is formed, and that calcitriol, which is active vitamin D3 or vitamin D, will now help in the absorption of calcium from the intestine. तो PTH तीन चीजें करता है, तीन. उसमें ये खास याद रखना क्योंकि आगे इस पे भी MCQ है. PTH acts on the kidney, on the PCT, helps. Who produces inactive vitamin D, Palakshi? Liver. And skin. Excellent. The skin, you remember, skin has in it 125 dihydroxy cholecalciferol excretion you'll have done. Okay, sure. Sorry. So skin, liver, vitamin D, inactive, goes to your kidney. Kidney के अंदर PCT cells में आपका PTH act करेगा, parathyroid hormone act करेगा, and inactive becomes active. Calcitriol बन जाएगा. Calcitriol क्या करेगा? Calcitriol small intestine में जाएगा और वहां से calcium को absorb करवाएगा. So one thing that parathyroid hormone does, it increases calcium absorption from intestine. Second, it will do is increases calcium absorption from bones in the form of calcium phosphate. It absorbs calcium from bones. And third, it increases calcium absorption from proximal convoluted tubule. तो intestine से calcium आएगा, bone से calcium आएगा, PCT of nephron से calcium आएगा, हर तरह से calcium आएगा, and your blood calcium level will increase. ये याद रखना. This is there in the NCERT. Everybody clear? Fine. So if a person is having problem with calcium phosphorus, means uska parathyroid PTH needs to be correct. Increase in bleeding time and delay in blood coagulation is due to deficiency of which hormone? I think I told you all that. Parathormone. What is the function of parathormone? Increases calcium. What is the function of calcium? ये भी मैंने सिखाया था आपको. एक तो calcium, blood हाँ, calcium आपके muscles में जाता है और वहाँ it will help in. Where is calcium released from in the muscle cells? Myofibril. Sarcoplasmic reticulum. Yeah, sarcoplasmic reticulum. And that calcium will help in unmasking of tropomyosin from troponin.
and troponin का shape change हो जाएगा. Calcium will stimulate troponin, will change the shape of troponin, which will help in unmasking of tropomyosin. So आपके actin and myosin binding sites खुल जाएंगे and they will bind to each other and with the help of ATP help in sliding. तो actin myosin contract होगा, आपका sarcomere छोटा हो जाएगा, will help in muscular contraction. याद है all of you all? Yes. That is the reason अगर आपका blood calcium level कम हो गया ना तो आपका sliding filament theory नहीं होगा and that will result in tetany. And one more thing that calcium will does. Calcium, please remember, ये आपको circulation chapter में आएगा. जब भी आपको cut होता है ना cut, ये तो आपको आता है स्कूल में किया था very quickly. What is released from the blood capillary, from a ruptured blood capillary? Quick. Fibrinogen. Thrombokinase. ये याद रखना सर, आपका जब ब्लड वेसल बर्स्ट होता है ना, इंजरी हुआ ना आपको, छुरी से हाथ कट गया तो ब्लड बाहर आता है. ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स से रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन. And thrombokinase and thromboplastin, ये याद रखना, you have this in circulation in the NCERT. And thrombokinase, thromboplastin will act on something called prothrombin. School में था ये? Yes. And prothrombin, which is inactive clotting factor 1, will then become active clotting factor 1. Inactive, जैसे inactive vitamin D becomes active vitamin D. Similarly, inactive clotting factor 1 will become active clotting factor 1. In the presence of calcium and some vitamin. जल्दी बोलो कौन सा vitamin? Vitamin K. Excellent. Vitamin K. तो याद रखना calcium and vitamin K के present में your thrombokinase or thromboplastin will act on prothrombin, which will get converted into thrombin, and that means inactive prothrombin becomes active thrombin. Active thrombin is called clotting factor number 1, which will then act on something called, ये याद रखना, ये part आपको circulation में भी है, and very soon when I start with next chapter of genetics में भी है. Active clotting factor 1, something called thrombin, will then act on inactive 2, which will become active 2. Inactive 3 to become active 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ऐसे 13 clotting factors होते हैं blood में. और जो 13वां clotting factor है ना, वो सुना है will stimulate fibrinogen, which is the blood protein, plasma protein. And fibrinogen, inactive, then becomes active fibrin. And active fibrin will now form threads. And ऐसे thread एक meshwork बनता है और उसके अंदर blood, RBC और platelets चिपक जाते हैं. And उससे वो आपका जो cut area था ना, वहां पर clot formation होता है. And that is called clot. That is the way आपका blood बंद हो जाएगा leak होना. Otherwise cut हुआ तो blood loss होता जाएगा ना. So how to prevent blood loss? By doing clot formation. And clot formation में fibrinogen becomes fibrin. But उसके लिए 13 clotting factor चाहिए. और उसमें से पहला clotting factor is stimulated by, please remember, thromboplastin, thrombokinase, and calcium and vitamin K. And by the way, sorry, all the 13 that is pro factor then becomes factor in the presence of calcium. तो सारे 13 factors को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, inactive से active बनाने के लिए calcium की जरूरत है. Now this process requires a lot of time ना. Cut होते ही क्या immediately clot आता है? नहीं, will take time ना. And that time required is something called as bleeding time.
which is about 1 to 2 minutes. और 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसे ब्लीडिंग टाइम कहते हैं. And then the blood coagulates. Getting it, all of y'all? Suppose you have parathormone deficiency. Parathormone यानी PTH कम है, means blood calcium level कम हो जाएगा. Blood calcium level कम हो जाएगा, which means आपका calcium के absence में the entire what we said na reaction of 13 clotting factors नहीं होगा, या slow हो जाएगा, and that means blood clotting को 2 मिनट से ज्यादा लगेगा, which means your bleeding time will increase, and that is bad. जितना डिले होगा आपका ब्लीडिंग टाइम में, उतना आपका डेंजर ऑफ ब्लड लॉस है. समझ आ रहा है? Where is this most significant? कब 100% आपका ब्लड वेसल रप्चर होने वाला है? Head injury. Hemophilia. Dengue. Childbirth. Good. One thing, childbirth. याद है, प्लेसेंटा जब रप्चर होगा, मैसिव ब्लड लॉस होगा. And if the lady is having calcium deficiency in her, or she's having PTH deficiency, or God forbid, she is having, please remember, clotting factor 8 or clotting factor 9. Hemophilia. Then याद है ना, 8 और 9 अगर deficient है, अगर 8 deficient है, तो inactive 9 will not become active 9, और अगर 9 deficient है, तो inactive 10 will not become active 10. और जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, 11, 12, 13 एक्टिवेट नहीं होंगे, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बनेगा, आपका क्लॉट नहीं बनेगा, एंड आपका ब्लड लॉस होता ही रहेगा. व्हिच वेरी ब्यूटीफुली यू ऑल सेड इज समथिंग कॉल्ड एज हीमोफीलिया, व्हिच वी विल लर्न इज एन एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर. आपके एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं हीमोफीलिया के लिए. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर. उससे बनता है क्लॉटिंग फैक्टर 9 या क्लॉटिंग फैक्टर 10. समझ आ रहा हूं? तो इफ अ लेडी हु इज डिलीवरिंग इज हैविंग प्लेसेंटा रप्चर, साथ में ब्लड लॉस होने वाला है, एंड शी इज हैविंग कैल्शियम डेफिशिएंसी, और शी इज हैविंग हीमोफीलिया, or she's having PTH deficiency, then she may have severe postpartum hemorrhage. And for that reason, if you've heard of it, all women during pregnancy are told to have calcium tablets. सुना है आपके घर में आपकी sister, somebody pregnant, her gynecologist will always tell her आप कैल्शियम की गोली खाओ. उससे 2 चीजें होती है. एक तो कैल्शियम बच्चे के बोन डेवलपमेंट में काम आता है, और दूसरा मदर का ब्लड कैल्शियम लेवल अगर हाई रहेगा, देन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, प्लेसेंटा रप्चर होने के बाद ब्लड क्लॉट इजीली हो जाएगा, अदरवाइज उनका पोस्टपार्टम हेमरेज बढ़ सकता है. अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू ऑल? एंड इफ द लेडी इज स्टिल द क्लासिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट a few days before delivery, the gynecologist will first thing do is check her blood calcium level. तो उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, कैल्शियम डिटेक्ट करेंगे, कैल्शियम अगर कम है तो उसको कैल्शियम के इंजेक्शंस दे देंगे, ताकि डिलीवरी के टाइम उसका पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं होना चाहिए. चलो, ये तो डिलीवरी के टाइम. एनीथिंग एल्स वेयर अ पर्सन में डाई बिकॉज ऑफ कट इन ब्लड वेसल्स, which is inevitable. Brain hemorrhage. Okay, something besides which major blood loss कौन से कंडीशन में होता है? अब तो डॉक्टर बनने वाले हो ना, सर्जन बनने वाले हो. अरे सर्जन बनोगे, इडियट्स. क्या करोगे सर्जन बनने के बाद? Surgery. So whenever you do any surgery, say you are doing a hysterectomy, you are doing a brain surgery, you are doing a any surgery, तो सर उसके अंदर बॉडी कट करोगे, ब्लड वेसल्स रप्चर होने वाले हैं, ब्लड लॉस होगा,
आप उसको खून चढ़ाएंगे, डेफिनेटली ब्लड लॉस होने वाला है। अगर किसी का ब्लीडिंग टाइम डिलेड है, then sir the person may bleed to death, and you have to immediately, if somebody is having a delayed bleeding time, start giving calcium. Are you getting it, all of y'all? So these are wonderful applications. हाँ, ये याद रखना, तो ये जरूर याद रखना, delay in blood clotting and delayed bleeding time is due to parathyroid deficiency. So then which hormone causes dilatation of blood vessel, increase oxygen consumption and glucogenesis? Lovely. So dilatation of blood vessel, increase oxygen consumption and glucogenesis. Your answer, adrenaline. Adrenaline, याद है, अब जब भागोगे, फ्लाइट फ्राइट फाइट, तो आपके मसल्स के अंदर शुगर चाहिए, एनर्जी बनानी है, एंड शुगर तो चाहिए, तो इट विल हेल्प इन ग्लूकोजेनेसिस. इन अदर वर्ड्स, आपका मसल के अंदर ग्लूकोज अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा. So what will it immediately break down? Quick. What does adrenaline break in the muscle? Glycogen. Glycogen. याद है, मसल्स में भी ग्लाइकोजन होता है, लिवर में ग्लाइकोजन बनता है, मसल में ग्लाइकोजन बनता है, एंड एड्रेनलिन जाके आपके मसल ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, जिससे ग्लूकोज बनेगा, एंड मसल के अंदर ग्लूकोज अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. और ये तो खास करके हार्ट में जरूरी है, क्योंकि हार्ट में तो कंटिन्यूसली पंपिंग हो रहा है, तो ग्लाइकोजन मैक्सिमम हार्ट मसल में होता है, एंड उसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस किया जाता है एड्रेनलिन की मदद से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे इंपॉर्टेंट है, इस पे डिपेंडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड तो ग्लूकोजेनेसिस करेगा एड्रेनलिन, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन करेगा. सर व्हाई शुड इट डू इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन? एनर्जी इज प्रोड्यूस. हाँ, इफ यू रिमेंबर, आपके मसल्स में शुगर ब्रेक हो रहा है, यू डोंट वांट एनारोबिक रेस्पिरेशन ना, नहीं तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, मसल पेन होगा, भाग नहीं सकोगे. तो एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, उसके लिए ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाना है, एंड दैट ऑक्सीजन कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय एड्रेनलिन. तो एड्रेनलिन आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाएगा आपके मसल्स के अंदर, खास करके आपके हार्ट के अंदर, एंड डायलेट्स ब्लड वेसल. सर जो मैंने अभी भी बताया, अगर आपके मसल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करना पड़ेगा. तब जब वो डायलेट होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, एंड मोर सरफेस एरिया मींस मोर आरबीसीज कैन पास थ्रू इट, एंड मोर ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अवेलेबल टू योर मसल सेल्स. So that is done by dilatation of, please remember, skeletal muscle blood vessels. Skeletal muscle blood vessels. Sir, कौन से ब्लड वेसल्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, ये भी मैंने सिखाया था आपको. So it is both vasodilator and vasoconstrictor. For skeletal muscle, it's a vasodilator. For which muscle, or rather for which blood vessel, it is a vasoconstrictor? Coronary artery. Excellent, सात्विक. Coronary arteries में vasoconstriction किया जाता है, और इसलिए अगर आपको मालूम है, of course you all know, जब भी स्ट्रेस होता है, you are emotionally stressed or physically stressed, running too much, there is always a danger that you may have a lot of flight, fight, fight. खास करके अगर इमोशनल स्ट्रेस में हो, फ्राइट, एड्रेनलिन, vasoconstriction. Satvik rightly said, coronary artery vasoconstrict means blood supply to your muscles of the heart, myocardium में blood supply कम हो जाएगा, and instead of aerobic, it will start doing anaerobic respiration, and it will start causing angina pain, which actually is good for you. क्योंकि अगर आप बहुत भागोगे, पागलों की तरह भागोगे, तो सर इतना ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन यूज होगा, मसल्स में ऑक्सीजन यूज होगा, कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. और याद है, ब्रेन को 20% ऑक्सीजन चाहिए आपके बॉडी का. शुगर भी आपके ब्रेन को 20% चाहिए.
तो भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेन को चालू रखना इंपॉर्टेंट है। सुपर्बली एड्रेनलिन क्या कराएगा, इतना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा कोरोनरी आर्टरी का कि आपको धीरे धीरे अंजाइना पेन होने लगेगा एंड यू विल कॉन्शियसली रियलाइज अब मुझे भागना नहीं है। तो दोनों कराता है, आपका अंजाइना पेन करवा के आपको बंद कर देता है। बट सर ये फ्लाइट में अच्छा है, फ्लाइट में अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्लाइट में अगर एड्रेनलिन बढ़ जाएगा और आपका वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, सर यू कैनॉट वॉल्यूंटरली कंट्रोल फ्लाइट। You can voluntarily by general motor area control flight, but your fright is involuntary. Emotional area, limbic system, involuntary, and it may help in release of too much adrenaline, constriction of coronary artery, angina, uncontrolled angina, myocardial infarction, heart attack, person dies. If you've heard of it, one of the leading causes of death is heart attack, and most common reasons nowadays of heart attack is not obesity. People are very health conscious. Everybody is eating protein diets, nobody is eating bad cholesterol, तला हुआ कोई नहीं खा रहा है. Everywhere in the world people are becoming conscious. Sunflower oil use कर रहे हैं, सफल oil use कर रहे हैं, olive oil use कर रहे हैं. आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आ रहा है जो पहले ग्राउंडनट ऑयल से, कोकोनट ऑयल से आता था. So no saturated fatty acids. Everybody's having polyunsaturated fatty acid. Then why are people still dying of heart attacks? Stress. So many people, financial stress, marital stress, and under stress they have adrenaline increase, vasoconstriction of coronary artery, angina, MI, death. Skeletal muscle, vasodilatation. Very importantly, coronary blood vessels are with excellent vasoconstriction. And yeah, and adrenaline acts directly on SA node. Can somebody tell me this beautiful logic? So the sinoatrial node which controls the heart rate. Excellent. ये तो स्कूल में किया था ना all of you. Generates impulse for the heart. आपके राइट एट्रियम, बाय द वे ये भी आपको है 12th में सर्कुलेशन चैप्टर में. सर आपके राइट एट्रियम में होता है समथिंग कॉल्ड एसए नोड, और एसए नोड गिव्स आउट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू योर एट्रिया, और उससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाय द वे ब्लड पहले किस में आता है, एट्रिया में या वेंट्रिकल्स में? एट्रिया ना. ऊपर से सुपीरियर वीना कावा, नीचे से इंफीरियर वीना कावा, स्कूल में किया था. रिटर्न्स ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम. फिर एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनेंगे और आपकी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सो ऑल दैट ब्लड विल गो फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स. एंड यू ऑल नो इट, यहां यू हैव valves, एट्रियोवेंट्रिकुलर valves. स्कूल में किया था. एंड वो खुलेगा, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में. ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes. And now SA node creates the electrical impulse, so it is called pacemaker. ये याद रखना, नीट में बहुत बार आया है. Who is the pacemaker of the heart? SA node. And फिर एट्रिया से आपका SA node से इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया, एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से वेंट्रिकल्स में चले गए. ब्लड यहां आ गया. अभी वेंट्रिकल को भी तो कॉन्ट्रैक्ट होना है ना, तो वेंट्रिकल को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा? सर यहां पर है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, और वेंट्रिकल्स के पास समथिंग कॉल्ड एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. और एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं इनटू योर मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल में. ये स्कूल में था किसी को? Yes, sir. एवी नोड याद है? Yes. Yes. तो एवी नोड से if you remember something called bundle of his आता है. Yeah. फिर bundle of his से बनते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, उससे बनते हैं. ये भी नीट में बहुत आ रहा है, परकिंजे फाइबर्स. ये था स्कूल में? Yes. हाँ, तो परकिंजे फाइबर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसको देते हैं? वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes. ये ना प्लीज याद रखना,
Very nice question. Who creates electrical impulse? SA node. Pacemaker. Impulses go to muscles of atria. Atria start contracting. Blood goes from atria into ventricle. In the meantime, SA node gives electrical impulse to AV node. AV node is a bundle of his से दो branch बनते हैं, right and left bundle branch. Right and left bundle branch. You may remember this anyway, you have to do it later. And these bundle branches give messages to Purkinje fibers. And Purkinje fibers stimulate the muscles of the ventricle to contract. And that causes ventricular contraction. ये क्यों जरूरी है? Why should ventricles contract? Of course, very important. That blood is pumped to the aorta. So from the right atrium, blood will go into your pulmonary artery. Pulmonary artery से it will go to lungs. और याद है आपके superior vena cava और inferior vena cava से आया था deoxygenated blood. और अभी deoxygenated को oxygenated तो करना पड़ेगा ना. तो एट्रिया से right एट्रिया से blood right ventricle में गया ऐसे नोड की वजह से. और फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि एवी नोड बंडल ऑफ हिज राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और उसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड गया आपके पल्मोनरी आर्टरीज और दोनों लंग्स में. फिर आपको मालूम है दोनों लंग्स के अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएशन होता है. आपका हैमबर्गर शिफ्ट एनीवे सॉरी आपका वो ओके सॉरी ऑक्सीजन डिसोसिएशन ऑक्सीजन निकल जाता है from RBC से कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है. In other words, deoxygenated becomes oxygenated, goes by pulmonary veins to the left ventricle और left ventricle से it goes into aorta. So right side में कौन सा ब्लड था? नीट में भी आया है deoxygenated blood क्योंकि वो आया था सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से. गया हार्ट में फ्रॉम वेंट्रिकल वाया पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड बन गया ऑक्सीजनेटेड. आया लेफ्ट साइड में सो लेफ्ट साइड इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और फिर व्हाई शुड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट? Distributed to the body. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड गोज इनटू ये तो आपको आता है एओर्टा. And aorta will supply that oxygenated blood to all the body parts. Muscles में gastric artery, renal artery, which forms afferent arteriole, efferent arteriole, renal tubule, of course, and sir, renal artery. तो sir, ये सारा aorta से आता है. तो sir, इसमें oxygenated blood जाता है. With me, all of you. So entire working of the heart, contraction of atria, contraction of ventricle, is all started by SA node, sinoatrial node. By the way, which nerves stimulate SA node and SA node को फटाफट इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाने को बोलता है? Sympathetic. Excellent यार. सिंपैथेटिक. ये आपने अभी अरे बराबर है ना बाबा. जब भागोगे फ्लाइट फाइट तो आपके सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिव हो जाएंगे और सिंपैथेटिक नर्व्स अभी तो किया है. सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला. Adrenal medulla will start giving out adrenaline. And what will adrenaline do? It will act on golden words in this question. SA node. Adrenaline will act on SA node and SA node will create more electrical impulses. So normally, if you have heard of it, ये भी याद रखना, SA node creates electrical impulses every 0.8 seconds. Means heart beats every 0.8 second, which is called one cardiac cycle. तो मुझे इतना बनाओ, एक बीट 0.8 सेकेंड, तो एक मिनट में कितने बीट हो गए? 72. Excellent. 72 beats. You have heard of it. Your normal heartbeat is 72.
बट जब अब भागोगे, यश राइटली सेड, सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होगी, adrenal medulla will give out adrenaline. Adrenaline in this question acts on SA node. SA node will, pacemaker will give fatafat electrical impulses, and instead of 0.8 seconds, your heart will start beating every 0.7 second, 0.6 second. In simple words, your heart rate will increase. You will have tachycardia, increase in heart rate. Which is good ना, अब भाग रहे हो, हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपके ब्लड में, मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा. फैंटास्टिक, कितना सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. And now that you know this, what will happen? Many people, please remember, as age increases ना, आपका SA नोड वीक होने लगता है. या अगर आप बहुत ज्यादा डर गए तो आपका ऐसे नोड है ना बंद हो जाता है. नहीं तो उसमें से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता ही नहीं है. व्हाट विल हैपन अगर ऐसे नोड सडनली बंद हो गया तो? No impulse for heart. नोड अगर बंद ही हो गया तो सर ऐसे नोड बंद हो गया मीन सर आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ऐसे नोड बंद हो गया तो एबी नोड बंद हो जाएगा. एबी नोड बंद हो जाएगा तो आपके परकिंजे फाइबर्स आपके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. इन अदर वर्ड्स आपका हार्ट बीट होना ही बंद हो जाएगा. व्हिच you all have heard of it, is something called, please remember in your circulation chapter, cardiac arrest. इसे cardiac arrest कहते हैं. तो सर याद रखना, constriction of blood vessel, coronary artery, which will cause decrease oxygen supply to the muscles of the heart, leads to heart attack, which is called cardiac infarction. Infarction, death. That is myocardial heart muscle infarction, MI. In simple words, heart attack. और हार्ट अटैक अलग होता है बेटा. हार्ट अटैक है ना कॉरोनरी आर्टरी के वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से होता है, और यानी वो वैस्कुलर सप्लाई को अफेक्ट करता है, वैस्कुलर सप्लाई को. और अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है हार्ट में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नॉट ब्लड सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिल्स, परकिंजे फाइबर्स, उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो आपका हार्ट बीट होना ही बंद हो जाएगा, which is then called cardiac arrest. तो सर कोई पर्सन रास्ते पे आपको ऐसे ही पड़ा है, he's just lying on the road. Sir, what are the reasons he is unconscious? Now sir, आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो ना, बनो कि नहीं बनो ये तो आना ही चाहिए. सर सबसे पहले आप क्या करोगे ना, वो अनकॉन्शियस पर्सन है ना, तो सर सबसे पहले ना उसका पल्स चेक करो. पल्स वाला ना, ऑफ कोर्स आपके ये रेडियल आर्टरी पे पल्स चेक करते हैं, और अगर उसका पल्स चल रहा है, दैट मींस ही इज आइदर हैविंग हाइपोग्लाइसीमिया, यानी उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, शायद वो डायबिटिक है और उसने इंसुलिन लिया है लेकिन वो खाना भूल गया, तो इंसुलिन लेवल बढ़ गया और बेचारे ने खाया नहीं, तो इंसुलिन ने क्या कर दिया, सारे ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना दिया, और ब्रेन को ऑक्सीजन शुगर नहीं मिला, तो आपका कॉन्शियसनेस चला जाएगा. समझ आ रहा है व्यू? तो आप क्या करोगे, हमेशा कोई ऐसा अनकॉन्शियस होकर उसका पल्स रहेगा ना, तो उसको आप पिपरमेंट दो. सबसे पहले तो उसको पॉकेट ही चेक करो. All diabetics are advised by their diabetologist always carry candies, instant sugar. तो उसके पॉकेट में अगर कैंडी मिला तो समझ जाने का वो डायबिटिक है, और उसको वही कैंडी उसके मुंह में डाल देने का. You will save his life. If there is less blood supply,
sorry, less sugar supply to the brain for 3 minutes, the person may die. So good, you have saved his life by giving him his own peppermint. That is if he has a pulse. If he does not have a pulse, पल्स ही नहीं है उसका, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, तो ये कार्डियक अरेस्ट है. What is the first thing you will do? CPR. Come on, you will save someone's life. बोलो बोलो. CPR. CPR. Of course मालूम है ना, आप हाथ ऐसे करोगे, दिखा ना पिक्चर में, फट फट उसके चेस्ट पे ऐसे ऐसे मारोगे. Sir, that is something called cardiopulmonary resuscitation, which in simple English, somebody rightly said CPR. तो उसका हार्ट लंग वापस से चालू कर रहे हो, रिससिटेट कर रहे हो, जिसे CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं. बेवॉच में देखा था ना, तो आपकी कौन थी हीरोइन? प्रियंका. नहीं नहीं नहीं, हाँ वो प्रियंका, एंड उसके पहले तो whatever. So sir, every episode they would just run in their red bikinis, rescue somebody from the water and start doing CPR. क्यों? क्योंकि अगर वो पानी में गया है, sir, he is frightened. पानी में जा रहा है ना, नीचे नीचे डूब रहा है, डर गया तो उसको आता है कार्डियक अरेस्ट, और उसके लंग्स में पानी भर जाता है, तो उसको पट 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 CPR देते हैं, जिससे वो वापस ब्रीथ करने लगेगा, उसका हार्ट वापस से चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका ऐसे नोड स्टिमुलेट करोगे आप. तो किसी को भी अगर पल्स नहीं आ रहा है, अनकॉन्शियस है, पानी में से मिला, रास्ते पे मिला, पल्स है, शुगर दो, पल्स नहीं है, CPR दो, ऐसे नोड को स्टिमुलेट करो. हाँ या ना, समझ आ रहा है all of you? And then you take him to the hospital, na? Of course, you'll take him to the hospital. What is the best thing you will do when he's in the hospital? समझो CPR से अच्छा नहीं हुआ, and वो 3 मिनट में मर सकता है, क्योंकि उसका हार्ट बीट नहीं होगा, तो ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और 3 मिनट में शुगर की डेफिशिएंसी में, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में पर्सन मर जाएगा. 3 minutes you have. Golden period. What to say that? You do tack tack tack. Excellent. हाँ, CPR करोगे. And CPR नहीं हुआ, you will use, you all have heard of it. Excellent. I'm so happy. Brilliant ना? Defibrillator. ये उसके चेस्ट के ऊपर आप कुछ इलेक्ट्रोड रखोगे और बाद में उसका शॉक दोगे, झम मारेगा ऐसा. तो सर पिक्चर में देखा ना सर, तो सर what are you doing by that electrical defibrillator? Stimulating his SA node. SA node को stimulate कर रहे हो, and that will remove him from his cardiac arrest. CPR किया, नहीं कुछ हुआ. समझो defibrillator दिया तो भी कुछ नहीं हुआ. अब एक फाइनल चीज कर सकते हो. फाइनल क्या कर सकते हो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन? आर्टिफिशियल पेसमेकर. आर्टिफिशियल पेसमेकर करेंगे बेटा. किसी को अगर ऐसे नोड लॉन्ग टर्म नहीं चल रहा है तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर देंगे. वेरी नाइस. जिसके अंदर आप है ना एक इलेक्ट्रोड को बाहर से अंदर स्टर्नम को तोड़ के अंदर डालोगे और उसको ऐसे नोड पे अटैच करो देंगे, और वो मशीन बाहर ही रहेगा, एंड इट इज प्रोग्राम्ड कि वो हर 0.8 सेकंड पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स देगा, एंड द पर्सन विल हैव ऐसे नोड की जगह वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स गोइंग टू एबी नोड एंड एवरीथिंग, और उसका हार्ट चलता रहेगा. तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं. वेरी नाइस देयर. अरे बट वो कब करोगे? जब पर्सन कॉन्शियस है. अगर वो अनकॉन्शियस है थोड़ी आप उसको पेसमेकर दोगे सर. उसमें तो कितने घंटे लगते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर डालने को. तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? फाइनल थिंग. उसके सिवा तो वो मर ही जाएगा. आपको मालूम है, पिक्चर में देखा है. So now you will take some injection and pull it in his heart. Anybody's heard of it? Yes, sir. Yes, sir. Adrenaline.
Yes, please remember that is an adrenaline shot. उसको हार्ट के अंदर डायरेक्टली एड्रेनलिन ब्लो किया जाता है, and that adrenaline will stimulate his SA node, which will straight away start rapidly creating electrical impulses. CPR doesn't work, defibrillator doesn't work, adrenaline shot doesn't work, death. Adrenaline shot works or something works, then what Tirth rightly said, you may then use an artificial pacemaker in case it's an old person jahan uska natural SA node chal nahi raha hai. Remember everything that I said in particular about all these aspects. Cardiac arrest, electrical activity band ho jati hai, circulation chapter. So that is in a way a part of your service. Then in which of the sorry. So I mean this in the nicest way possible, sir, but can we just please finish MTG and Arihan? Okay, sorry. Yeah, Riyan, okay, fine. Sorry. मुझे ना यार रे तुम्हारा 12th level का बहुत मजा नहीं आता. So it's very interesting. Yeah, sorry. Yeah, you're right. Yeah. Do it after the doubt, sir, please. Yeah, I'm so sorry. You're right. I'm also so sorry, sir. You're right. I get carried away. That's my problem. Sorry, you're right. Sir. बेटा एक काम करेंगे, आपके NCERT related doubts हो गए तो पूछो, बाकी you can wait after, because if everybody is not interested, then it's not correct that we have a very long lecture. Tirth, NCERT related बोलो. सर यही क्वेश्चन में डाउट था सर, इसमें सी आंसर हो सकता है क्या? Dorsal root of spinal nerve नहीं बेटा, because dorsal root of spinal nerve is for sensory nerves ना बेटा. So it will send impulse to spinal cord spinal nerve किया ना. हाँ, तो that is what by the way, तो adrenaline directly affects, what has it got to do with dorsal root of nerve fiber? वो तो sensory nerve है, वो तो skin से आएगा. याद है ना all of you? तो dorsal root से जाएगा, फिर dorsal horn में जाएगा, फिर उसका ascending track बनेगा, then pyramid, crossover, etc. to the general sensory area. Okay, no, nothing to do with it. Then, in which of the following option hormone is not matching with its source and function? Parathyroid, thyroid, the parathyroid hormone, source thyroid, decreases blood calcium. Absolutely wrong. So, if it is thyroid, then it should be thyrocalcitonin, TCT, and that will decrease calcium. But if it is parathyroid, then it is not thyroid, it is parathyroid gland. And it will not decrease calcium, it will increase calcium. With me, all of you? Fine. So that is 56. Then, besides corticotropin releasing hormone, I think everybody is asked me this. Besides corticotropin releasing hormone, which other hormone stimulates release of ACTH? Answer is epinephrine. जो अभी हमने detail में किया. Epinephrine, other name of adrenaline. Good, I taught you all this in detail. Now, you all tell me why should epinephrine help in the release of CRH? Quick. Riyanshu is getting late. Quick. Sir, we need glucose for energy synthesis. So epinephrine, because then adrenocorticoids or adrenocorticotropic hormone will stimulate the cortisol hormone so cortisol will increase the metabolism. Lovely. Kavya, brilliant. I love it. Excellent. Did you understand all of you all? She said a very nice thing. Excellent, beta. Aapka dhyan se adrenal medulla will give adrenaline. And adrenaline increases heart rate, increases sugar supply to your muscles, increases oxygen supply, sugar supply to muscles. So aerobic respiration hoga, sugar breakdown hoga, muscles jaldi beat karenge.
सर बहुत जल्दी आपके मसल्स में जितना भी ग्लाइकोजन है ना वो खत्म हो जाएगा। कितना इतना लॉन्ग लॉन्ग मैराथन भागते हो, 42 किलोमीटर, आपके अफ्रीकन से पागल की तरह भागते हो, इतने पतले पतले मसल्स होते हैं उनके, हाथ पैर कैसे छोटे छोटे होते हैं उनके, तो उनके मसल्स ही इतने छोटे छोटे हैं, इतना ज्यादा भागते हैं वो लोग कि उनके मसल्स ही डिजनरेट हो चुके हैं। तो उसके अंदर ऑक्सीजन और शुगर ग्लाइकोजन का इतना स्टोर होगा, तो बेचारा भागेगा कैसे 42 किलोमीटर? Nobody has so much glycogen reserve in the muscle. So immediately adrenaline will act on hypothalamus, and hypothalamus will give out corticotropin releasing factor. Corticotropin releasing factor will give out corticotropin, in other words ACTH. ACTH will now act on adrenal cortex. Adrenaline, sympathetic nerve, fight, adrenaline, hypothalamus CRH, pituitary ACTH, ACTH adrenal cortex, medulla stimulated cortex. Cortex gives out cortisol, and cortisol, we all know, is the most potent for glucose metabolism. वो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, वो आपका लाइपोलाइसिस करेगा, सब तोड़ ताड़ के ब्लड शुगर बढ़ाएगा, और वो शुगर अब आपके उस बेचारे नीग्रो मैराथन रनर के याद है ना, एड्रेनलिन ने ब्लड वेसल को भी डायलेट कर दिया, और वो शुगर ऑक्सीजन सब उसके मसल में जाएगा, एंड वो 40-42 किलोमीटर भाग सकेगा। सर लेकिन उसको बहुत पसीना भी आएगा ना, कितना भाग रहा है, कितना पसीना आता है, तो सर पसीने में एक तो पानी जाता है, और दूसरा और क्या जाएगा, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट भी जाते हैं। तो इमीडिएटली ना एड्रेनलिन स्टिमुलेट्स सेल इन द हाइपोथैलेमस, क्विक पैरावेंट्रिकुलर cells, ADH reabsorbs water, urine formation less, water preserved in the blood will increase. Good, भाग रहा है, पसीना हो रहा है, ब्लड में पानी की कमी हो रही है, ADH रिलीज होगा, पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यूरिन कम बनेगा। एज इट इज वो भाग रहा है, यूरिन तो आने वाला नहीं है उसे, यूरिया आप 4 घंटे के बाद निकाल सकते हो, 4 घंटे में कोई यूरिया आपके ब्लड में इतना नहीं हो जाएगा कि आप मर जाओगे, तो डजंट मैटर, लेट दैट यूरिया एक्यूमुलेट इन द ब्लड। बट हाँ, वाटर खींच के बॉडी में वाटर लेवल बढ़ा दो, ताकि आपका ब्लड वॉल्यूम बना रहे, ब्लड प्रेशर बना रहे, और ब्रेन को ऑक्सीजन और शुगर मिलता रहे, मसल को ऑक्सीजन शुगर मिलता रहे। सर इसके लिए एडीएच रिलीज होगा, बट सर ADH has got water का control. It has got nothing to do with salt control, ना? So, sir, how do you retain salt? If you remember, आपके बॉडी में अगर सोडियम कम हो गया ना, सोडियम बहुत प्रॉब्लम है। आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही तो सोडियम से होता है, सोडियम पोटेशियम पंपिंग। You need sodium. You cannot be hyponatremic. स्वेट हो रहा है, भाग रहे हैं आप 40 किलोमीटर, कितना स्वेटिंग होगा बेचारे को, उसमें वाटर के साथ कितना सॉल्ट जाएगा। हाउ टू इंक्रीज सॉल्ट सप्लाई बैक इन द ब्लड? Adrenaline, CRH, ACTH, not only cortisol but also aldosterone. Aldosterone reabsorbs sodium from the PCT, and blood sodium level will increase. Let him sweat, doesn't matter, वो तो inevitable है, होना ही पड़ेगा। बट आपके यूरिन में से सॉल्ट एब्सॉर्ब कर लो, सोडियम एब्सॉर्ब कर लो, ब्यूटिफुली दिस इज कंट्रोल्ड बाय एपिनेफ्रिन एडेनल। लवली क्वेश्चन, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, डाउट्स लेटर you can all write down your doubts in a book and you all can do it later. A patient of diabetes mellitus excretes glucose in the urine even when kept on a carbohydrate free diet. It is because fats are catabolized in adipose tissue to form glucose. Please remember, ये याद है, ये तो मैंने very quickly I'm going,
Riyansh, bear with me. Sir, you have, sir, insulin acts on receptor of glucose. And वो receptor खुलेगा जिससे ग्लूकोज आपके सेल में जाएगा, से आपके लिवर सेल में ग्लूकोज जाएगा, एंड लिवर सेल में ग्लूकोज विल बिकम ग्लाइकोजन. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू ऑल? और किसी नॉर्मल सेल में, सॉरी एक सिंपल, किसी नॉर्मल सेल में वो ग्लूकोज जाएगा क्योंकि इंसुलिन ने रिसेप्टर को खोला और रिसेप्टर से अंदर ग्लूकोज गया और नॉर्मल सेल में ग्लूकोज जाएगा, फिर उसका होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीएस, एटीपी बनेंगे एंड सेल चलता रहेगा एटीपी की मदद से. बट सर समझो उसको डायबिटीज है एंड सर उसको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, लेकिन इंसुलिन नहीं आ रहा है. दैट मीन्स वो रिसेप्टर नहीं खुल रहा है क्योंकि वो रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, तो गेट्स ऑफ ग्लूकोज आर नॉट ओपनिंग. दैट मीन्स ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल. If glucose cannot enter the cell, तो glycolysis, ETS, Krebs cycle नहीं होगा, ATP नहीं बनेगा, सेल मर जाएगा. Sir, it will immediately help in the release of, I hope you remember, ghrelin. याद है? उसे भूख लगती है और भूख लगती है ना हंगर सेंटर पे, हाइपोथैलेमस पे ग्रेलिन एक्ट करेगा, भूख बढ़ेगी और खाएगा. याद है पॉलीफेजिया होता है, लेकिन सर कितना भी खाएगा, कितना भी उसके बॉडी में शुगर आने दो, शुगर तो जाएगा ही नहीं ना सेल में क्योंकि गेट ही बंद है, इंसुलिन ही नहीं है. तो सर हाउ विल द सेल गेट एनर्जी? ग्लूकोज नहीं अवेलेबल हो रहा है ना, बिंदास फैट्स को तोड़ो. आपकी बॉडी में कितना सारा फैट्स होता है, तो आपने भूख लगी थी ना, अच्छा किया इंसुलिन ने. और डायबिटीज में अच्छा हुआ कि ग्रेलिन आया, क्योंकि ग्रेलिन रिलीज होगा तो आप शुगर ही थोड़ी खाओगे. आप शुगर, प्योर शुगर नहीं खाता है कोई, तो सर वो नॉर्मल डाइट खाएगा ना. आपके जो दादा दादी नाना नानी डायबिटिक्स है, रोटी सब्जी ये सब खाते हैं, उसमें थोड़ा ऑयल भी आ जाता है, और वो ऑयल अगर बॉडी में जाता है, हाँ ऑयल तोड़ने के लिए थोड़ी आपको इंसुलिन चाहिए, तो आपके बॉडी में आप लिपिड टूटने लगेंगे. और लिपिड तो याद है ना सर, ग्लूकोज इज 4.1 kcal, लिपिड तो इज मोर देन 9 kcal, उससे ज्यादा एनर्जी बनेगी और सेल चलता जाएगा. बट हाँ बहुत ज्यादा लिपिड टूट रहा है, पर याद है ना लिपिड का टूटने का एक ही प्रॉब्लम है कि उससे बनते हैं बहुत सारे कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी याद है आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, उससे आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है. तो एसिड हो जाएगा ब्लड एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन को मिल जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, and the person may have respiratory failure, die. So please remember, if you're having diabetes mellitus, person will give glucose in the urine, glycosuria, क्योंकि कितना भी खाएगा ग्लूकोज सेल में तो जा ही नहीं रहा है, तो कहां जाएगा सारा ग्लूकोज? यूरिन में जाएगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा. That is, gives out excessive glucose in urine, though he is kept on carbohydrate free diet. क्योंकि अब what is happening, sir? Whatever you're eating is having now lots and lots of other nutrient, lipids, but lipids का lipolysis किया जाएगा. By the way, who will do that lipolysis of lipids? Quick. Cortisol. तो डायबिटिक्स में ना cortisol लेवल बढ़ जाएगा. Cortisol breaks down lipids into glucose. है ना? Lipid will become fatty acid glycerol, glycerol will become DHAP, fatty acid become acetyl coenzyme, फिर reverse glycolysis से glucose बन जाएगा, gluconeogenesis हो जाएगा, and that glucose will now in the cell, हाँ by the way fat cell में जाएगा, within the cell ग्लूकोज नहीं जा सकता है, ग्लूकोज गेट बंद है, इंसुलिन नहीं है, तो फैट तो जा सकता है, और फैट तो वैसे भी सेल मेम्ब्रेन से ही चला जाएगा ना, वो तो परमिएबल होता है ना सेल मेम्ब्रेन में. सेल मेम्ब्रेन आर लिपोप्रोटीन, तो उसमें तो फैट अपने आप ही चला जाएगा. फैटी एसिड ग्लिसरॉल, उसका ग्लूकोज, तो सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा. सुपर सेल ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीएस, सेल चलता रहेगा, बट वो कीटोन बॉडीज बनते रहेंगे. And sir, so now what will happen? You will have lots and lots of ketone bodies,
and he will at least live. But the problem is diabetic ketoacidosis. And so fats become glucose. Yaad rakhna. And why should that glucose be made? So that glucose within the cell can help glycolysis, Krebs cycle ETS to produce ATP for the cell to do metabolism. Otherwise, the cell will die, body will die in case of diabetes. Insulin is critical. Clear, all of you? Okay, fine. Nevertheless, sorry. Okay, I'll now stick to this. Which of the following statements is incorrect? Androgens are produced by ovary. No, androgens are produced by adrenal cortex. By zona NCRT. Riyanji, answer them. So I know you're active. Reticularis. By zona reticularis. So androgens are not by adrenal ovary, but by adrenal cortex. Okay. Then low level of progesterone and estrogen stimulates GnRH production. Yaad hai na? Estrogen, progesterone come will give a feedback to hypothalamus, and hypothalamus will increase FSH-RH and LH-RH, which are now called gonadotropin releasing hormones. जिससे pituitary में gonadotropin, FSH, LH release हो गए, and आपके ovary से estrogen और progesterone release होगा. With me, all of you? 1 minute. Are you understanding? I'm not, sorry. I think you're getting saturated. I'll stick to the syllabus now. Hi, Anna. Ye within syllabus. Okay. Then select the correctly matched pair. Sir, cholecystokinin stimulates pancreatic enzyme secretion. Wo correct hai. Cholecystokinin will help pancreatic juice to absorb bicarbonate, making it alkaline. And cholecystokinin, sorry, that is by secretin. Cholecystokinin acts on pancreatic duct. And pancreatic duct contract होगा, जिससे pancreatic enzymes secrete होगे into your duodenum, trypsinogen, chymotrypsinogen, etc. And cholecystokinin also acts on gallbladder to release bile, and cholecystokinin also acts on pancreatic duct to release pancreatic enzymes, which will help in digestion, trypsinogen, chymotrypsinogen, etc. तो वो correct है. Pineal gland, now correct match है, ये अच्छा question है. Pineal gland does not influence menstrual cycle. अभी मैंने बताया pineal gland melatonin reduces FSH, LH and prevents menstrual cycle. All of you? So ये सब काम ही आ रहा है आपको जो मैंने सिखाया. तो sir, it will influence the menstrual cycle. मेलाटोनिन ज्यादा है, FSH, LH कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी. इसलिए वो फ्रॉक को, फीमेल फ्रॉक को समर विंटर स्लीप में ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवरीज में अननेसेसरीली एग्स वेस्ट नहीं होंगे. फिर कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन, एब्सोल्युटली नॉट. कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन. Interstitial cells are erythropoietic. No sir. Interstitial cells, what do interstitial cells give out? Quick. Androgens. Androgen, na? Interstitial cells, also called Leydig cell, give out testosterone, androgens. Who is erythropoietic? Erythropoietic is not interstitial cells. Nice question. Which cells are erythropoietic? Quick. Juxtaglomerular cells. All of you. Juxtaglomerular cells are erythropoietic. Next. Then all hypophyseal hormones are peptides except too much at your level. Chalo, anyway, diya hai to, even if you don't remember this, okay, but just in case for the ones who want to, so all hypophyseal hormones are peptides except prolactin releasing inhibiting factor, PRIH. Prolactin releasing inhibiting factor is not an amino acid of 20 types, which are called peptides. It is an amino acid of only one type, that is tyrosine. Tyrosine से बना हुआ होता है prolactin releasing inhibiting factor. ये इतना याद रखना आपके सिलेबस लेवल पे, वो भी नहीं है आपके एनसीईआरटी में. But remember, prolactin releasing inhibiting factor is made of only tyrosine. Which other hormones are only tyrosines?
Thyroid. Thyroid. Thyroxine. And epinephrine, norepinephrine are also only tyrosine, but with amine group. So they are called catecholamines. Yeah, all of you. The NCERT are catecholamines, which are also tyrosine. Melanin is also only tyrosine. So yaad rakhna, this may come up, sir, that thyroid hormones and adrenaline, noradrenaline, that is epinephrine, norepinephrine, and melanin and और क्या बताया मैंने? हाँ, ये बताया था ना, sorry. And please remember PRIH, prolactin releasing inhibiting factor, is also made of only tyrosine. So T3, T4, epinephrine, norepinephrine, melanin, which controls your skin pigmentation, and PRIH, prolactin releasing inhibiting factor, are only tyrosine. Means they are not polypeptides. They are, if you remember, amines. जब एक हार्मोन एक ही अमाइनो एसिड का होता है ना, तो उसे अमाइन कहते हैं. अमाइन, वो पॉलीपेप्टाइड नहीं कहते हैं, अमाइन कहते हैं. हाँ, उसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर कैटेकोलअमाइन. T3, T4 are iodothyronine amine, and melanin is an amine, and rather prolactin releasing inhibiting factor is an amine. And by the way, ये NCERT level पे, I mean sorry, not NCERT, but ये आपके level पे आ सकता है. Please remember, actually ना, prolactin releasing inhibiting factor is by itself dopamine. Sir, dopamine acts as prolactin releasing inhibiting factor. तो सर आपका जब 8-9 महीना हो जाता है ना, 8-9 महीना, 8-9 months are over after lactation, then immediately your hypothalamus, sorry, your, अभी तो मैंने आपको सिखाया, आपका substantia nigra in the brain starts giving dopamine, and that dopamine goes to hypothalamus, which is now called prolactin releasing inhibiting factor, and that will act on pituitary gland, and pituitary gland will stop giving prolactin, and prolactin बंद हो जाएगा, and that means now milk बनना कम हो जाएगा. तो सर ये तो कितना खराब है ना, दूध तो बनते रहना चाहिए, क्यों दूध बंद हो जाता है? अगर बच्चे को आप बहुत सालों तक दूध पिला सको, अच्छी बात है ना. And if a lady keeps on producing milk, तो सर किसी बच्चे की अगर मम्मी एक्सपायर हो गई डिलीवरी में, तो उस बच्चे को भी दूध दे सकती है. काउज एंड बफेलोज तो कितना दूध देते रहते हैं. ह्यूमंस क्यों 6-8 महीने में ही दूध देना बंद कर देते हैं? Quick, ऐसे ही फास्ट. Ovulation then. अरे the lady wants to have another child ना. अगर प्रोलैक्टिन हाई रहेगा, तो सर what will happen? लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा सालों तक, और उसको दूसरा बच्चा नहीं हो सकता है. और सर दूसरा बच्चा करना है, that's a law of nature. Every species is dominant over other species by overproducing. Okay, चलो, sorry, we'll do that in evolution chapter. सर तो ये याद है. Okay, sorry, Riyaj, sorry. Binding of hormone to cytoplasmic receptor and complex binds to hormone receptor element of DNA within promoter DNA. Sir, okay. Binding of hormone to a cytoplasmic receptor. Do you remember कि आपके steroid hormone का act करते हैं? ये आपको इस syllabus में है. Steroid hormones act on, I taught you this, all of y'all. Where do steroid hormones act on? Receptor, which is either in cytoplasm or in nucleus. Nucleus. ये याद रखना, ये syllabus clever है. And याद है ये जाएगा DNA में. याद है all of you? This is NCERT all of you. And DNA then undergoes transcription to produce mRNA. हाँ या ना? Yes. और जहां से, प्लीज रिमेंबर, ये आपको मैं सिखाने वाला हूं इन द चैप्टर दैट वी आर डूइंग, जहां से DNA undergoes transcription
to produce mRNA is something called promoter DNA. नाम से मालूम पड़ रहा है ना, it promotes transcription. So it promotes transcription, which is called promoter DNA. And where does that hormone act, steroid hormone act on? Promoter DNA. So suppose you have testosterone. Testosterone goes into cell directly through cell membrane, and cell membrane में जाएगा and cytoplasmic receptor या nuclear receptor पे act करेगा, and then that hormone receptor complex जाएगा और promoter DNA को attach करेगा, जो आपका ये question है. और promoter DNA will then help in transcription of the entire gene, and that gene forms mRNA, and mRNA forms protein. And by the way, testosterone से कौन सा protein बन सकता है? टेस्टोस्टेरोन से समझो मसल है तो एक्टिन मायोसिन बन सकता है. टेस्टोस्टेरोन मेक्स यू मस्कुलर. अगर ये टेस्टोस्टेरोन आपका बोन सेल है तो ऑसिन बन सकता है. सुना है टेस्टोस्टेरोन मेक्स यू टॉलर. या समझो वो आपका स्किन सेल है तो टेस्टोस्टेरोन एक्ट्स ऑन स्किन सेल, जिसमें से बनता है केराटिन, जिससे आपकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है. हाँ या ना? तो कौन सा जीन पे एक्ट कर रहा है? प्रमोटर जीन. और प्रमोटर जीन से mRNA, mRNA से प्रोटीन. ओके, सॉरी. नाउ नेक्स्ट. देन ये तो आपका I'll do that later for those who are interested. Thinking, reasoning question है. Then the patient in this picture depicts an instance of acromegaly. Sir, if you're seeing, ये अच्छा question है. ये आपके NCERT में दिया नहीं है, but I think I hope you'll remember. What are the signs of acromegaly? ये तो सिखाया था आपको. Fingers become long. Prognatism. अरे lovely. देखो उसका जॉ बढ़ गया ना साइज में. Prognatism. Excellent. हाँ, तो ये NCERT में दिया नहीं है, but good we learned. That's there in these MCQ books, so it may help you to remember. तो prognatism हो रहा है. Do you remember? Flat bone size में बढ़ते हैं ना, long bones नहीं बढ़ते हैं. Okay, acromegaly is after adulthood. Enlargement of phalanges. आपके एपिफैसियल डायाफैसियल प्लेट फ्यूज हो गए हैं, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है, लेकिन आपके फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स नहीं ग्रो हो सकते. फ्लैट बोन्स तो ग्रो होगे ना, तो मैंडिबल ग्रो होने लगता है. तो प्रोग्नाथिज्म है. वेरी गुड. और कौन से बोन्स दिख रहे हैं जो बहुत बड़े हो गए? पैलेंजेस. पैलेंजेस साइज में बढ़ रहे हैं. तो सर, दैट इज अ क्लासिकल साइन ऑफ एक्रोमेगाली. गुड क्वेश्चन. वी हैव डन इट. यू रिवाइज्ड. And which of the following is a 32 amino acid water soluble peptide hormone? ये नहीं है syllabus में, but you may remember calcitonin. याद है? PTH, that is TCD, that is thyrocalcitonin, is secreted by thyroid, but it is not amine. It is not tyrosine derivative. Tyrosine derivative are T3, T4. TCT is not amine. By the way, TCT is made by parafollicular cell, not within the colloid. And TCT is not an amine. It's not an amine. It is a amino acid chain made of many different types of amino acid. So, इसे क्या कहेंगे? Not amine. This is called as polypeptide. It is a polypeptide or protein. It's not amine, it's a polypeptide or protein. And ये आपके लेवल पे नहीं है. आपको, I mean, nobody is going to ask you this, but it is made up of 32 amino acid. जैसे मैंने बताया था, आपके A chain, B chain, C chain और preproinsulin, first question only, are made of many different types of amino acid. So आपका similarly calcitonin is made of 32 amino acid, which is not a amine, it is a polypeptide. Then parathyroid influences calcium absorption in vitamin D by regulating vitamin D. अभी मैंने बताया था, Palakshi nicely said, what does parathormone do? Parathormone acts on kidney, और kidney के अंदर आपका inactive vitamin D3 becomes active vitamin D3, which is also called thyrocalcitonin. And thyrocalcitonin क्या करता है? Which is called calcitriol.
कैल्सिट्रियोल, और कैल्सिट्रियोल को दूसरा नाम है विटामिन डी, और विटामिन डी अभी हमने किया. व्हाट डज विटामिन डी डू? विटामिन डी हेल्प्स इन absorption of calcium from the small intestine. Helps in calcium absorption of small intestine. But तो ये सब जो हमने किया ना एक्चुअली काम आ रहा है आपको. Then gastrointestinal hormone, which gastrointestinal hormone stimulates insulin secretion? हाँ, ये भी हमने किया था. याद है और कि आपके स्टमक से जब फूड जाता है डियोडेनम में, तो डियोडेनम में जैसे ही फूड जाता है ना, आपके आई होप यू रिमेंबर enteroendocrine cells start giving out gastric inhibitory peptide. जो हमारे सिलेबस पे तो एक ही हमने किया कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा एनसीईआरटी के हिसाब से, इट स्टॉप्स द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस. एचसीएल सिक्रीशन बंद हो जाएगा. अच्छा है ना, पेट अगर खाली है और एचसीएल सिक्रीट होता रहेगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, आपका अल्सर आ जाएगा. तो जीआईपी क्या करेगा, जैसे ही खाना डियोडेनम में जाएगा जीआईपी रिलीज होगा, जीआईपी जाएगा और स्टमक के अंदर एचसीएल सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन बंद कर देगा. बट ये ना एक्चुअली तो चलता है, ये इतना कुछ मेजर काम नहीं है. मेन सबसे इंपॉर्टेंट कि सर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ये ग्लूकोज आपके जेजुनम और इलियम से एब्सॉर्ब होगा, याद है ना, स्टार्च बिकम्स मॉल्टोज सलाइवा में, फिर डियोडेनम में अगेन स्टार्च बिकम्स मॉल्टोज, फिर मॉल्टोज इन द डियोडेनम बिकम्स मॉल्टेज की मदद से ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड एक्सेट्रा गैलेक्टोज, और फिर डियोडेनम से जेजुनम और इलियम में ये मोनोसैकराइड आएंगे और खास करके ग्लूकोज ब्लड में एब्सॉर्ब होगा. एंड सर ग्लूकोज जैसे ब्लड में जाएगा ना, व्हाट विल हैपन, यू विल हैव हाइपरग्लाइसीमिया, एंड इफ यू हैव हाइपरग्लाइसीमिया दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल क्विकली गो इनटू यूरिन एंड यू विल हैव ग्लाइकोसूरिया, and the body never wants to lose precious glucose. So rather what to do, immediately convert that glucose na into what, Glycogen. And which hormone will help in the release of glycogen, or rather convert glucose into glycogen? Insulin. So sir, while the food is still in duodenum, not even gone to jejunum ileum, the duodenum gives out gastric inhibitory peptide, which acts on beta cell of pancreas, and beta cell of pancreas पे act करके insulin release कराएगा. फूड तो भी डियोडेनम में है और इंसुलिन सिक्रीशन चालू हो गया और ब्लड में इंसुलिन आ जाएगा, एंड जब वो जेजुनम इलियम से जैसे ही ग्लूकोज एब्सॉर्ब होगा और ब्लड में जाएगा, बिफोर दैट ग्लूकोज गोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया, इंसुलिन इतना बढ़ चुका ना कि ऑल दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्विकली इन योर लिवर, इन योर मसल्स, अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन, क्विकली ओपन्स नामिनो ग्लूकोज गेट्स, और उसमें ग्लूकोज चला जाएगा और ग्लूकोज के अंदर सेल के अंदर जाएगा, खास करके हेपाटोसाइट में और मायोफाइब्रिल में, एंड दैट ग्लूकोज देन बिकम्स ग्लाइकोजन. तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स फॉर्म पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोजन. Nicely we have stored that extra glucose, converted into glycogen, and not allowed even one single C6H12O6 to go into urine. Preserved precious glucose. Nice. Doubts later, beta. Just doubt later. लिख लीजिएगा बाद में करें. हाँ. सर नहीं सर, मेरी ना डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है 8:15 को. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं as it is a lecture record कर रहा हूँ. Okay, I will send it. You come to this point and then you see if you have the time. Okay, and whichever questions you have doubts now, उसको fast forward करके देख. Okay, Shiga, all the best. See you tomorrow. Then type 1 diabetes is caused by destruction of beta cell of islet of Langerhans. ये भी मैंने सिखाया था, याद है? Type 1 diabetes is insulin dependent diabetes mellitus, जिसके अंदर, who remembers this? Yeah. You remember, it is autoimmune, in which antibodies are formed against beta cell, and beta cells of liver are destroyed at birth itself.
and that means that child will never have insulin, क्योंकि उसका बीटा सेल ही टूट गया. किसने तोड़ा उसको? एंटीबॉडी ने. क्यों? क्योंकि उसका ऑटो इम्यूनिटी था. That means no insulin. Means he will now have complete destruction of beta cell, and that is now type 1 diabetes, जिसमें उसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन देना पड़ेगा, which is called insulin dependent diabetes mellitus, IDDM, insulin dependent diabetes mellitus, IDDM. And in that cert, please remember, insulin can be taken as injections by type 1. उसको इंजेक्शन देंगे, इंसुलिन इंजेक्शन देंगे. सर क्या इंसुलिन उसको ओरली दे सकते हैं? No. नेवर. इंसुलिन प्रोटीन है. हाँ, के स्टमक में जाते ही इंसुलिन which is protein by pepsin will break down into polypeptides, into आपके peptides and proteases peptones, and बाद में वो पूरा तरह ब्रेक हो जाएगा. तो इंसुलिन कभी भी खा नहीं सकते, उसको इंजेक्शंस के फॉर्म में देना पड़ता है. And that means assertion is also true, reason is also true, but reason is not the explanation of assertion. Insulin आप दे सकते हो by injection has nothing to do with destruction of beta cell by antibody, which is called type 1 diabetes. So assertion reason को explain नहीं करता, reason assertion को explain नहीं करता है. So both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Then which of the following is not a function of progesterone? It stimulates mammary secretion, which by NCRT is correct. हाँ, तो यहाँ दोनों answers, rather सब answers correct है. It will help in gestation. Pregnancy में help करेगा. Gestation, pregnancy hormone. It helps in uterine growth and development. याद है ना? And inner lining endometrium grow होगा for secretory phase. Inhibition of ovulation. LH is the main ovulatory hormone. And अगर progesterone, progesterone होगा, so what will it do? एक second. Sorry, correct. If progesterone is high, what will happen if progesterone is high? It will give a feedback and LH will become low. याद है ना all of you? Progesterone high तो LH कम हो जाएगा. LH कम हो जाएगा तो ovulation नहीं होगा. So it will inhibit ovulation and it stimulates mammary secretion. वो जो आपके NCERT में दिया है कि आपका mammary gland, sweat glands become modified mammary gland. So all statements are correct. ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है. And which of the following causes mammary glands to enlarge at puberty? Sir, enlarge कौन कराएगा? ये भी मैंने आपको सिखाया था. सब आपको काम आ रहा है. Who will enlarge the mammary gland? Estrogen. Please remember ना, fat deposition तो estrogen करा रहा है. Fat deposition is done by estrogen. So please remember, estrogen will help in enlargement of the mammary gland, and progesterone will only convert sweat glands into milk producing gland. तो sweat gland का milk producing apparatus बनाया, उससे कोई size of mammary gland enlarge नहीं होता है. वो तो सिर्फ दूध बनाने का छोटा सा apparatus बनता है. Size कौन बढ़ाता है mammary gland का? Enlargement कौन कराता है? Estrogen, by depositing fats in the mammary gland at puberty. Clear all of you? So ये आपके MTG में ही थे. अरिहंत के अंदर बहुत कम questions है. Most of it are just repeat. So we'll just quickly go through those. Which of the following pituitary hormone works indirectly? हाँ, ये एक अच्छा question है. So, which hormone works indirectly? ये भी मैंने बताया था आपको. Anybody remembers? Growth hormone. Acts on the liver. तुम लोग amazing हो यार. Great. Growth hormone. याद है growth hormone इतना छोटा अमाउंट में आता है. छोटा ना, हार्मोन से छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं. क्या वो आपके पूरे बॉडी में जाके आपका मस्कुलर ग्रोथ कराएगा, हर एक बोन पे एक्ट करके आपका हाइट बढ़ाएगा, आपका ग्रोथ कराएगा? नॉट पॉसिबल यार. इतना तो हार्मोन, एक हार्मोन इतना काम कैसे कर सकता है? तो नाइसली, व्हाट डज ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड डू?
एक्ट्स ऑन It लिवर, acts on liver. और लिवर में थोड़ा सा भी ग्रोथ हार्मोन जाएगा ना तो लिवर सेल से रिलीज होंगे बहुत सारे सोमैटोमेडिन्स, और सोमैटोमेडिन जाएंगे आपके ब्लड में, और सोमैटोमेडिन इतना एम्पलीफाई हो गया ना कि थोड़े से ग्रोथ हार्मोन ने एम्पलीफिकेशन से बहुत ज्यादा सोमैटोमेडिन बना दिया, और सोमैटोमेडिन इतना लिवर से और बाय द वे किडनी से भी बनेगा, और वो लिवर और किडनी से इतना सोमैटोमेडिन बनेगा कि आपके बॉडी के हर एक सेल में जाके, आपके बॉडी के हर एक बोन में जाके ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके बनाएगा, ऑस्टियोसाइट, जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, और आपके मसल में जाके सोमैटोमेडिन स्टिमुलेट करेगा आपके किसको स्टिमुलेट करेगा बाय द वे, क्विक क्विक क्विक, सॉरी जीन टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टू फॉर्म एक्टिन मायोसिन, जिससे आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाँ, तो याद रखना, इट्स ब्यूटीफुली डन। व्हिच हार्मोन इज एक्टिंग इनडायरेक्टली? ग्रोथ हार्मोन। उसमें टीएसएच आंसर दिया है जो रॉन्ग है। टीएसएच वर्क्स डायरेक्टली, टीएसएच वर्क्स डायरेक्टली। बाय द वे, if growth hormone was not given now, then TSH would be correct. Can you explain me why? Because TSH is actually helping, we have learned that, in the formation of thyroglobulin, not thyroxine. Then iodine will enter the colloid and convert thyroglobulin into T3 and T4. So TSH, not directly T3, T4, indirectly by forming thyroglobulin. So best is GH. If not given, then TSH. Then the amino acid tryptophan is helping in the formation of melatonin and serotonin. Sir, melatonin or serotonin are made, they are polypeptide. है तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड से और 20 टाइप के अमाइनो एसिड से होता है, लेकिन उसमें ना मैक्सिमम आता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। तो दूसरे भी आते हैं फेनाइलएलानाइन और फिर मीथियोनिन एंड टायरोसिन एंड ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, you all know the names, but maximum कौन है? ट्रिप्टोफैन। तो सर बोथ मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ज्यादा करके ट्रिप्टोफैन के बने होते हैं। तो सर अगर आपको रात को अच्छा सोना है ना, तो आप एक काम करो, बहुत सारा ट्रिप्टोफैन कंज्यूम करो, उससे बहुत मेलाटोनिन बनेगा और मेलाटोनिन से आपको नींद आ जाएगी। तो सर ट्रिप्टोफैन के लिए क्या कंज्यूम करने का? मिल्क। You all have heard of it. Milk, casein. Casein is also full of tryptophan. And if you drink milk, casein टूटेगा, उससे बहुत ट्रिप्टोफैन आपके बॉडी में अवेलेबल हो जाएगा, ब्रेन में जाएगा और इससे मेलाटोनिन बनेगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। Then a pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotients, abnormal skin. We all know is sign of cretinism. NCRT. And that is because of deficiency of iodine in the diet. Lady had iodine deficiency, जो किया है हमने NCRT में, and she has hypothyroidism. And if she has hypothyroidism, she will not give out thyroxine. If she doesn't give out thyroxine, then sir, the child will also not get thyroxine. याद है during pregnancy, याद है pregnancy lactation किया था हमने reproduction में. During pregnancy, mother's thyroxine level has to increase because baby का thyroid gland तो अभी तक बना ही नहीं है और baby के अंदर cell division करना है, metabolism करना है. Metabolism is mainly controlled by thyroxine. और baby अगर fetal stage में अभी तक वो morula, blastula, gastrula stage में है तो उसके हर एक सेल को thyroxine stimulate करेगा, लेकिन सर thyroid gland तो बहुत later बनेगा endoderm से. अभी तो baby का endoderm कहाँ बना है? तो सेल डिवीजन फटाफट कराना है, फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ थायरॉक्सिन. बेबी का तो थायरॉक्सिन बाद में बनेगा, तो मदर का थायरॉक्सिन बढ़ेगा प्रेगनेंसी में, और मदर का थायरॉक्सिन बढ़ेगा और वो जाएगा ट्रांसप्लासेंटली इनटू द fetus and will help in cell division. So what will happen if there is iodine deficiency in the mother's diet during pregnancy?
mother will have hypothyroidism. तो बेबी को डेवलपिंग फीटस को ट्रांसप्लासेंटली थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा और बेबी का ब्रेन डेवलप नहीं होगा and everything will be a problem and he will suffer from cretinism. So iodine deficiency is a cretinism. Then irregular menstrual cycle in adult women and cretinism are related to hypothyroidism. What I just said, it is related to hypothyroidism. And congenital removal of thyroid will cause cretinism. So congenital removal, याद है बच्चे को अगर थायराइड, न्यूबॉर्न चाइल्ड को अगर थायराइड का ट्यूमर हो गया तो उसका थायराइड निकाल देना पड़ेगा. And sir, that is called congenital removal of thyroid. What is congenital? Since birth. At birth. At birth till the child is 1 year of age. That if you have any problem, then that is called congenital. And अगर आपके congenital at birth only अगर उसका thyroid निकाल दिया तो उस बच्चे का क्या हो जाएगा? Cretinism. क्योंकि अगर उसके 1 साल पहले आपने thyroid gland निकाल दिया तो there is no thyroxine ना. And याद है ना, brain develops maximally in the first 2-3 years. And in the absence of thyroxine, बच्चे का brain ही develop नहीं होगा. And he will have mental retardation. He will have cretinism. Ayan, all of you? Okay, fine. Sorry. समझ में आ रहा है all of you all? Yes. Yes. थके नहीं ना? Okay, I'll just quickly finish. Sorry, guys. Okay. Then which hormones play a significant role in osteoporosis? Very nice. So, एक तो you all know parathyroid. अगर parathyroid कम है, तो कैल्शियम कम हो जाएगा. Calcium कम हो जाएगा. And by the way, what does parathyroid also do? The absorption of calcium from bones. Parathyroid, other we put it the other way around. So I'll make it simple at our level. Sorry. Parathyroid अगर ज़्यादा है, it will increase blood calcium. For increasing blood calcium, it will reabsorb a lot of calcium from the bones. Calcium phosphate bone से खिंच जाएगा और blood calcium level बढ़ जाएगा. Bone calcium level कम हो जाएगा. And अगर mild bone calcium deficiency है, तो उसको कहते हैं osteoporosis. बहुत ज्यादा है तो याद है bones के अंदर holes आ जाएंगे. Osteitis fibrosa cystica हो जाएगा. तो too much parathyroid can cause osteoporosis. 1. By the way, please remember, estrogen also helps in deposition of calcium in bones. Question number 250 in your reproduction. If you remember, आपके back notes में दिया था. So, sir, what will happen in a lady post menopause? Estrogen कम हो जाएगा. Estrogen कम हो जाएगा, तो calcium bone में deposit नहीं होगा lady का, और उसको धीरे धीरे osteoporosis हो जाएगा. So, सुना है, that's the reason आपके दादा, दादी, नानी, मम्मी also now at this age, if she is menopausal, starts having the fractures easily. Because bones are becoming weak. खास करके दादी माँ को सबको बोला जाता है गिरना मत, आप गिरोगे फ्रैक्चर हो जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा हील होने को, क्योंकि उनका ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है. क्यों? ईस्ट्रोजन नहीं सिक्रीट हो रहा है, तो बोन में कैल्शियम नहीं आ रहा है. And that is the reason, सुना है ना, most women are always told to have calcium supplements. Not only during pregnancy, but women को तो post menopause also keep on giving them calcium. तो उनके bones में calcium की कमी ना हो, osteoporosis ना हो. And then increase in bleeding time, delay in blood clotting, we did it. Parathormone, ये किया था. Repeat it. Chemical signal that acts both as an endocrine and neural is epinephrine. अभी किसने किया? Epinephrine acts as both endocrine and neural. How's our endocrine? याद है ना? Epinephrine helps in release of CRH, corticotropin releasing factor. जिससे corticotropin, जिससे cortisol. Cortisol बढ़ेगा तो sugar, glycogen, lipid become glucose और आपके muscles को glucose मिलेगा. So that is nice. That is it is acting as endocrine. And how neural? Sir, epinephrine is a part of parasympathetic nervous system. Heart rate बढ़ाएगा, respiration rate बढ़ाएगा, सब sympathetic activity करेगा. तो याद रखना, ये अच्छा question है, within the syllabus है. Which hormone is both neural and endocrine? Epinephrine. By the way, आपका जो first question था ना in MTG, explain how endocrine is neural and neural is endocrine. Simple. Epinephrine is the common connection. Okay, fine. Sorry. भूल गए तुम लोग. It's okay. Then a patient is diabetic
excretes glucose in urine, kept on carbohydrate-free diet, same, because fats are catabolized into adipose tissue to form glucose. Repeat. याद है ना all of you? Glucose available नहीं है, तो ATP के लिए fats तोड़े जाते हैं. Yeah. Then, which one of the following is not a second messenger in hormone secretion? Sodium. If you remember, sodium नहीं होता है, calcium होता है. Calcium is a second messenger, not sodium. Calcium is a second messenger. Yeah, all of you. Calcium, IP3, inositol triphosphate, and then you have cyclic adenosine monophosphate, and also cyclic guanosine monophosphate. ये भी आपको ऑप्शन में दिया है. Many students put this cyclic guanosine monophosphate. So fine. Good. Straight away आ गया. So do you remember in hormone है तो वो receptor पे act करेगा, acts on GTP, and GTP will then become cyclic guanosine monophosphate, which will then act on adenyl cyclase, which will then convert ATP, adenosine triphosphate, into adenosine monophosphate, which will act as second messenger and will enter the nucleus, gene, transcription, translation, protein. Now, to yaad rakhna, nice logic. Please remember, all of you, that calcium, CAMP, cyclic adenosine monophosphate, cyclic guanosine monophosphate, and inositol triphosphate are all secondary messengers. But sodium is not a secondary messenger. Sodium is not a secondary messenger. Then estrogen, testosterone bind to cytoplasmic receptor or nuclear receptor. Yeah, no? A hormone can be either cytoplasmic or it can be nuclear. Steroid hormones, estrogen, testosterone, are either cytoplasmic or nuclear receptor, which then act on promoter DNA. And then you have a lovely question. Which statement is incorrect about inhibin? Sir, inhibin, long time ago, बताया था मैंने reproduction में, inhibin na is secreted by follicular cells of the ovary. Follicular cells of the membrana granulosa cells of developing tertiary follicle, Graafian follicle. Inhibin release होता है. याद है all of you कुछ? क्या भूल गए? Yes, sir. क्या बात है? याद है तो अच्छी बात है. तो सर टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, खास करके टर्शियरी फॉलिकल से इनहिबिन रिलीज होता है. एंड व्हाट विल इनहिबिन डू? Inhibin will act on your pituitary and stop the release of FSH. और FSH कम हो जाएगा. बहुत जरूरी है. क्यों सर? अगर FSH हाई रहेगा ना, then it will stimulate lots of primordial follicle to keep on enlarging. And that means बहुत जल्दी LH आने वाला है, और LH बहुत सारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा. LH तो ओव्यूलेटरी है, तो बहुत सारे ओवर रिलीज होंगे. बहुत ओवर रिलीज होंगे तो क्या हो जाएगा? ट्विन्स, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स. बाय द वे ऑल मोनोजाइगोटिक. सॉरी, ऑल क्या था दूसरा वर्ड? I mean different zygote. Sorry. तो क्योंकि बहुत सारे ओव्यूलेशन हुए हैं. समझ आ रहा है व्यू? हाँ, सो फ्रेटर्नल, पैटर्नल ट्विन्स, नॉट फ्रेटर्नल, पैटर्नल. तो ये प्रॉब्लम आ सकता है. तो इमीडिएटली व्हाट विल हैपन? इनहिबिन will increase from follicular cell and will act on pituitary and decrease FSH, which will not allow many follicles to enlarge, preventing multiple ovulation.
तो एक काम है इनहिबिन का डिक्रीजेस एफएसएच, ऑप्शन बी। दूसरा काम है इनहिबिन का सर्टोली सेल से भी रिलीज होता है इनहिबिन, बाय द वे। So not only membrana granulosa cells of follicle, also Sertoli cells of your seminiferous tubule. So why should Sertoli cells give out inhibin? So again, inhibin will act on pituitary gland and decrease FSH. And you remember, FSH अगर कम हो जाएगा तो उससे क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगा. Sir, which is important? Spermatogenesis कम हो जाएगा, which is, so when will inhibin be released? Logic, I say, just for fun. Logic, quick. If too many sperms are being formed. There's no ejaculation. Absolutely. Celibacy. अब बाबा रामदेव, you are a yogi, Sant Mahatma, you are not having ejaculation. Why should the body waste precious energy in spermatogenesis? So if you're not having ejaculation, if you're having sperm production unnecessarily, then what will Sertoli cells do? Sertoli cells will start giving inhibin. Inhibin will decrease FSH. FSH कम हो जाएगा, spermatogenesis बंद, and body will conserve energy in not allowing spermatogenesis. So ये भी right है, ये भी right है. Molecular weight is 10,000 to 30,000 Dalton. ये भी right है, ये ठीक है, but ये भी right है. It is a lipoprotein? No, it's not a lipoprotein. It is a pure protein. It is a polypeptide. It is not a lipoprotein. It is a polypeptide. Just to remember this. Then, what is correct to say about the hormone action in humans? In females, FSH first bind with specific receptor on ovarian cell membrane. Nice question. Does FSH act on ovarian cell membrane? Yes. Yes. If you remember, FSH is Peptide hormone. peptide, na? So peptides always act on cell membrane. फिर वो हमने बताया GTP, GMP, adenyl cyclase, ATP, CMP, IP3, calcium, transcription, translation. So that is correct. FSH binds with this. Then the other logics. Glucagon secreted by beta cell, wrong. Glucagon alpha cell, khatam. Secretion of thymosin increases with aging, no, decreases with aging, khatam. FSH stimulates secretion of estrogen, progesterone, no, FSH helps only the estrogen. Theca interna. Progesterone is by LH. LH acts on corpus luteum to give progesterone. ये भी याद रखना. तो ये D option wrong है. Many of you think D is correct. बहुत सारे students ने question mark भेजा. D क्यों wrong है? D क्यों wrong है? क्योंकि FSH only stimulates theca interna of follicle to give estrogen, not progesterone. हाँ, progesterone is given by corpus luteum, and corpus luteum is stimulated by LH. By the way, if the question was LH stimulates secretion of estrogen, progesterone, then is it right or wrong? Right. Ah, gather all of you. Corpus Corpus luteum luteum more gives high amount of progesterone, थोड़ा estrogen. By the way, थोड़ा estrogen क्यों secrete होना चाहिए corpus luteum से? Quick. याद है प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस लुटियम परसिस्ट हो है ना 3 महीने के लिए अंडर एक्शन ऑफ HCG. हाँ या ना? Yes. And also under action of prolactin. So it is called luteotropic hormone. Maintains corpus luteum. हाँ या ना? Yes. And what will corpus luteum do? Gives out progesterone. Progesterone will act on endometrium. Maintain endometrium. जहां प्लेसेंटा बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा और बेबी को नरिशमेंट मिलेगा ट्रांसप्लासेंटली. प्रोजेस्टेरॉन तो जरूरी है आपको, प्रेगनेंसी हार्मोन. ये एस्ट्रोजन क्यों सीक्रेट किया जा रहा है? व्हाई शुड कॉर्पस लुटियम गिव थोड़ा एस्ट्रोजन?
तो डायग्राम भी दिया एनसीईआरटी का, सेकंड पीक, क्विक। एस्ट्रोजन तो रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को, अभी रिपेयर तो कब से हो गया है, तो प्रिपरेशन चल रहा है। Why should estrogen be given in pregnancy? Negative feedback. Deposition of fats in the mammary glands. Good. Deposition of fats in the mammary gland. Prolactin तो आएगा, उससे भी फैट डिपॉजिट होगा, लेकिन थोड़े से एस्ट्रोजन से भी फैट डिपॉजिट होगा। गुड। एनीथिंग एल्स? कैल्शियम। हाँ जी, कैल्शियम आयंस। हाँ, गुड, ओके। कैल्शियम बढ़ेगा, intestinal absorption of calcium. Okay, that's a decent, good. There's a nice logic. Anything, but very important. Very, very important. Think, logic. Reduces FSH level because of negative feedback of Brilliant. Excellent. Estrogen should be given by corpus luteum in the first 3 months because HCG maintains corpus luteum to give estrogen थोड़ा सा, and prolactin तो बहुत बाद में रिलीज होगा, प्रेगनेंसी के काफी टाइम के बाद. I don't know, prolactin gives negative feedback and releases, prevents FSH, LH. But ये ovulation prevent करेगा, fair, prolactin. But that is mainly, please remember, mainly post-parturition, where prolactin is high, FSH, LH is low, and causes lactational amenorrhea, which is good. The mother cannot become pregnant again, and her nourishment need not be distributed between her own developing fetus and the newborn baby. तो मिल्क प्रोडक्शन बच्चे को मिलता रहेगा क्योंकि नया बेबी अंदर डेवलप ही नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोलैक्टिन ने एफएसएच को कम कर दिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया. दैट इज फेयर, बट प्रोलैक्टिन तो बाद में रिलीज होगा. समझो लेडी इज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट. इफ कॉर्पस लूटियम वाज गिविंग ओनली प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम मेंटेन होता था. But sir, it gave estrogen also, and Rutvi, excellent. Why did corpus luteum give thoda sa estrogen? Because estrogen also has a negative feedback na on FSH, and it will decrease FSH in those crucial few months, and thereby not allow follicle to enlarge only. FSH helps in follicle na. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल. तो एफएसएच नहीं है तो फॉलिकल ही बड़ा नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, and that means she will not have multiple pregnancy. Please remember, corpus luteum has to secrete thoda sa estrogen. Decreases FSH, prevents follicles to enlarge, prevents new ovulation during pregnancy. Lovely logic. Then ये हो गया. Then parathyroid gland regulates calcium phosphate level in the blood. That is correct. And PTH stimulates absorption of calcium by renal tubule and increases calcium absorption from digested food. जो अभी हमने किया था. What does parathyroid do? Sir, एक तो वो डायरेक्टली proximal convoluted tubule से calcium खींच लेगा, और दूसरा पीटीएच जो अभी हमने किया था will act on kidney. Inactive vitamin D becomes active vitamin D, and active vitamin D, calcitriol from kidney, helps in absorption of calcium from the digestive system. So beautiful, both are correct. So this also good, we had explained earlier, this there in the Arihant. Then consider the following statements. Double vision, irritability, and hypoglycemia are due to hypersecretion of glycogen. Sir, hypersecretion of glycogen. What will happen if there is hypersecretion of glycogen? By the way, sorry, glucagon hona chahiye na? What is given in your books? Anybody? Right now, 130. Glycogen. Glycogen is given. Yeah. Hypersecretion of glycogen. Okay ना? नहीं, वो I think अरिहंत में मिस्टेक है. इसको कट करके ग्लूकेगॉन लिख लो.
Yeah, so Glycogen but in cannot be the hypersecreted. in the explanation part, they've used glycogen in this. It must be a typo. Can you tell me what is the explanation quickly? Okay, just hold on. When I have it. Okay. Question number It's on page 5. Sir, in the explanation, they have given that double vision, irritability, and hypoglycemia caused due to hypersecretion of glucagon. तो question में mistake है, explanation बराबर है. Exactly. No, sir, question is correct. The correct answer should have been glucagon. That's why the statement becomes false. Sorry, answer was given glucagon. नहीं, तो भी वो wrong है, क्योंकि glucagon है ना, अगर hypersecrete होगा, what does glucagon do? Yeah, okay, fair enough. What will glucagon do? It's okay. Glucagon blood sugar level will help in glycogenolysis. Glycogenolysis. And glycogenolysis से blood glucose level will increase. Correct? So, by their explanation, if one was given glucagon, which will do breakdown of glycogen into glucose, will it cause hypoglycemia? Hey, sir, it will cause hyperglycemia. With me, all of you. And please remember, will it cause double vision, irritability? What is double vision and irritability found in? In hypoglycemia. बहुत टाइम से आपने खाना नहीं खाया है, लेक्चर में बैठे हो 3-3.25 घंटे से, भूख लग रही है, इरिटेशन हो रहा है, रियांश तो बोल चुका है मुझे, and that is because of hypoglycemia. So that's the reason I keep on telling you all before I lecture eat. Otherwise, hypoglycemia decreases concentration also, causes irritability also, and also causes double vision, diplopia. Diplopia double vision होता है. तो ये ना बहुत बार अगर भूख लगी और रास्ते पे चल रहे हो, आपको डबल दिखने लगता है, फिर चक्कर आता है, गिर जाते हो. So please remember, double vision, diplopia, irritability are all signs of hypoglycemia. They are not due to hypersecretion of glucagon. Rather, they are due to deficiency of insulin. Deficiency of insulin से ये होता है. So, insulin deficiency will lead to, hypersecretion of just एक second. Sorry. अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो what will happen? Insulin ज्यादा होगा, then glucose will become glycogen, which will cause hypoglycemia. Correct. And is hypersecretion of insulin. If insulin is more, then glucose will become glycogen, glycogenesis, and blood glucose level will decrease. Correct, all of you? And blood glucose level will decrease, which will cause hypoglycemia. And hypoglycemia will lead to double vision and irritability. Sir, can you have oversecretion of insulin? How stupid. Somatostatin है ना आपके pancreas में, delta cell. Somatostatin जाके insulin को control कर देगा. That's not possible. So when can you have hypersecretion of insulin? Insulin shock. Brilliant. Insulin shock. Given in NCERT, insulin shock. And when does that happen? Hypoglycemia. Very high blood sugar. Insulin shock. So when can it happen? Naturally, autoimmunity. वो बात नहीं करेंगे. A simple, when do many people get hypersecretion of insulin? Not hypersecretion actually. Diabetics. When they are given insulin and following giving insulin, they are supposed to eat. But if they don't eat, then what will happen? Insulin insulin levels are high. And that will convert all the available sugar into glycogen. And that will lead to hypoglycemia, that will lead to irritability, and that will lead to double vision. तो इसको insulin बना दो. It is neither glucagon nor glycogen. Both are wrong.
And so 1 is false. And in 2, in hypoglycemia, there is rapid movement of glucose from the blood to the hepatocytes and adipocytes. And ये भी wrong है. In hypoglycemia, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocyte. No, rather there is rapid deposition of glucose from the liver into blood. So, sir, glucose, blood say. Because glucose is turning into glycogen in hypoglycemia. So the blood sugar level will decrease. So Actually, it is cause and effect. Okay, cause and effect. मैं इफेक्ट की बात कर रहा था कि नॉर्मली जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तब रिलीज होता है ग्लूकेगॉन, और ग्लूकेगॉन आपके लिवर और मसल में जाके, लिवर में खास जाके ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके हेपेटोसाइट से ग्लूकोज ब्लड में डालेगा एंड योर ब्लड ग्लूकोज लेवल विल नॉर्मलाइज. हाँ, but what you all are saying, why does hypoglycemia take place? Why does hypoglycemia take place? Because insulin helps the rapid movement of glucose from blood into hepatocytes and decreases blood sugar level. But sir, उसको है ना actually hypoglycemia नहीं कह सकते. Hyperglycemia becomes euglycemia. इंसुलिन कभी भी इतना सिक्रेट नहीं होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा. So that is in a way incorrect. Are you getting it all, sir? So it doesn't. इसका explanation क्या दिया है आपके पीछे बुक में? So doesn't this statement mean that if there is low like hyposecretion, then you'll have more deposition in hepatocytes and adipocytes, not like that, not the inverse. Like hypoglycemia will cause the statement like that. That's what I'm exactly saying, na beta. So then it should be correct, right? Like it should not be euglycemia then. It should be hypoglycemia. Isn't it correct? Because I think they're saying that hypoglycemia is caused because of the movement. That's what I'm saying. Hypoglycemia is caused because of movement of glucose from blood to hepatocyte. So it's a hypoglycemic hormone word used kiya hai. Okay, so okay, fair. Because they say that insulin is a hypoglycemic hormone, it causes rapid movement of glucose from hepatocyte and adipocyte into blood. From blood into hepatocyte adipocyte. But then it should be hypoglycemic hormone. You cannot say it causes hypoglycemia. That is incorrect. Okay, hypoglycemia hota nahi hai. Okay, ठीक है, it's okay. Sorry? That will be correct. Now, if they move into your adipocytes and hepatocytes, you'll have hypoglycemia. This statement is saying that because you have hypoglycemia, they move in. So that's incorrect, right? That's what I'm saying. Now, in hypoglycemia, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocyte is incorrect. Na? In hypoglycemia, They say that in hypoglycemia, there should be movement of glucose from hepatocyte into blood. Yeah, so to correct the hypoglycemia. To correct the hypoglycemia. So according to me, both 1 and 2 are wrong. Okay, so that's fair. Anyway, this depends on how you interpret. It's okay, fine. Then, quickly, somatostatin inhibits intestinal absorption of glucose. Can somebody tell me how? I say this is a lovely logic. Chalo, we have all the geniuses. Bolo, Riyansh, Shiniket, Dhun, Vimika, Riya, the last people standing, 45 left. Bolo. How does the pancreas to decrease insulin? Sorry, beta. Does it act on the pancreas and decrease GH and somatostatin, right? It decreases GH and then pancreas and insulin. No, remember, somatostatin is growth hormone inhibiting hormone. You getting it? Growth hormone inhibiting hormone will decrease growth hormone. And growth hormone was supposed to prevent insulin release. Higher now.
Yeah. And that means it should increase blood glucose level. I'm sorry, it should increase blood glucose level. And why should blood glucose level be high? So that fats need not be converted into glucose and fats can get converted into proteins. याद है मैंने बताया था ये. तो ग्रोथ हार्मोन कुछ भी करके प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा. थायरोक्सिन लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनाने की कोशिश कर रहा है और ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन को उल्लू बना देता है क्योंकि वो इंसुलिन को ही रिलीज नहीं होने देता है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है. So thyroxine need not convert fats into glucose and nicely growth hormone converts fats into protein. So sir, actually growth hormone inhibiting hormone, if it is decreasing growth hormone, means inhibition of insulin will decrease. And that means glucose level should decrease. हाँ कि नहीं? एक मिनट समझ में आया? Yes. Then, does somatostatin inhibit intestinal absorption of glucose? Yeah, right. Does, Why? It does, because somatostatin increases. That means growth hormone decreases. And growth hormone causes the conversion of, increase in glucose. So then if there's less growth hormone, there'll be less increase in glucose. So less intestinal absorption. Brilliant. Excellent. Yeah, Vedika, excellent. समझ में आया all of you all? Exactly opposite will happen. Super. Then, sir, melatonin is secreted by pineal gland. That is correct. And melatonin is secreted by pineal gland. That is correct. फिर वो third है, sorry. Then Leydig cells secrete progesterone. That's wrong. Leydig cell give out testosterone. And fourth, mixed edema is a thyroid disorder is correct. ACTH is secreted by neurohypophysis wrong. ACTH is secreted by adenohypophysis. So one is correct. Somatostatin inhibits intestinal absorption. Nicely explained by Vedika. Leydig cell give progesterone is wrong. So 2 is wrong. 3, melatonin given by pineal gland is correct. 3 is correct. 4th, mixed edema is thyroid disorder is correct. And 5th, ACTH given by neurohypophysis is wrong. It is adenohypophysis. Nice question. इसको mark करना अच्छा ही है. Nice. उसमें first statement खास याद रखना. Good question. And then read the statements below and mark the correct option. Catecholamines decrease heartbeat, strength of heart contraction, rate of respiration. No, sir. Catecholamine adrenaline increases it. So 1 is incorrect. Aldosterone acts on collecting duct to increase absorption of water along with electrolyte, which is actually correct. Barabar na? Aldosterone acts on collecting duct. Doesn't it act on the DCT? Ah, good. Please remember, not collecting duct. Its primary action is on the DCT, distal convoluted tubule. ADH acts on both distal convoluted tubule and collecting duct. But that is not for electrolyte absorption. That is only for water absorption. Super. Nice. Aldosterone does not act on collecting duct. It only acts on DCT. So 2 is wrong. And then androgenic steroids given by adrenal cortex stimulate growth of axial, pubic, facial hair. That is the correct one. Aldosterone is a main glucocorticoid wrong. Aldosterone is a main mineralocorticoid. Aldosterone is main glucocorticoid. Cortisol is main mineralocorticoid. Cortisol is main glucocorticoid. Aldosterone is main mineralocorticoid. Ulta hona chahiye. And read the following statements and mark the incorrect one. ये भी अच्छा question है. Epinephrine does not produce second messengers. True or false? False. 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 Is it false? Yeah. So it's true, right? Epinephrine. Yes, sir. Epinephrine, that is a catecholamine or protein or glycoprotein
or act on cell membrane. Then GMP, GTP, etc., and IP3 calcium, etc. So they will produce second messengers. Which hormones don't produce second messengers? Steroid hormone. Yeah. Steroid hormones. Steroid hormones. Thyroid. And thyroid hormones. Yaad rakhna. Steroid and thyroid hormones do not produce growth hormone because they can pass directly in the nucleus. That is cytoplasmic nuclear receptor. So first statement is correct. Do not produce second messengers. They produce second messengers. I don't know why they'll get it incorrect. Then So it will be incorrect. False. It should be correct. It be false, right? Because it says it does not. It does not, yeah. Sorry. In the sense, sorry. I'm sorry. Yeah. It does not produce secondary messengers is incorrect. It produces secondary messengers. So one is correct. I'm so sorry. Thank you, Beda. And insulin deficiency and or insulin resistance results in diabetes mellitus, which is insulin, diabetes mellitus, insulin resistance, corrected by insulin therapy. Thymoxines increase production of interferon to produce cell-mediated immunity, correct or incorrect? So incorrect. Now, why, Mishri? What is thymoxine produce? Increase production of not interferon, T lymphocyte. antibody. एंटीबॉडी यानी कौन सा प्रोटीन? नॉट इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन भी एक प्रोटीन होता है जो वायरस से रिलीज होता है एंड प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अटैकिंग अदर सेल्स ऑफ द बॉडी. तो समझो HIV, समझो हेपेटाइटिस वायरस है ना, लिवर सेल में गया एंड लिवर सेल विल गिव आउट इंटरफेरॉन जो बाजू वाले लिवर सेल पे एक्ट करेगा, और बाजू वाले लिवर सेल पे इंटरफेरॉन एक्ट करेगा ना, तो आपका जो हेपेटाइटिस वायरस है ना, वो इन्फेक्टेड लिवर सेल से बाजू वाले नॉर्मल लिवर सेल में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरफेरॉन वो सेल मेम्ब्रेन को बंद कर देगा. समझ आ रहा है व्यू? सो इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन्स produced by body cells, but that is not humoral immunity. That is different. What is humoral immunity? That thymoxines help in B lymphocyte to produce antibodies. By the way, that is not interferon antibody, and that is anyway not called cell-mediated immunity. That is called humoral immunity. So everything is incorrect here. एक तो thymoxine से interferon नहीं बनते हैं, antibody बनते हैं, और वो cell-mediated immunity क्यों होता है? वो humoral immunity होता है. So third, absolutely incorrect. And pituitary hormones regulate growth and development of somatic tissue and activity of peripheral endocrine gland. Absolutely. Somatic tissue by giving growth hormone somatomedin, and peripheral endocrine glands, in other words, आपका thyroid gland and parathyroid gland, sorry, not parathyroid, thyroid gland, adrenal gland, etc., etc. So peripheral tissue को control करता है. That's correct. So 1 and 3 are incorrect. Good question. And hormone involved in maintaining calcium balance in the body includes all except aldosterone. Aldosterone has got nothing to do with calcium balance. Aldosterone is for sodium balance. Then gradual atrophy, degeneration with aging is shown. It's an NCERT exemplar. ये याद रखना पड़ेगा, by the way. It's an exam NCERT question. So where does atrophy take place? Nice question, huh? I'm happy they've given this. Please remember. It be thymus gland. हाँ, atrophy thymus में तो होता है ना. Thymoxine कम हो जाता है, immunity कम हो जाती है old age में. By the way, please remember, very nice logic. There is also atrophy of your pineal gland with age. आपकी उम्र बढ़ती है ना, खास करके post 60, 65, आपका pineal gland जो होता है ना, उसमें calcification होने लगता है. तो pineal undergoes calcification and that is gradual atrophy. Very, very bad. क्या होगा इससे? दादाजी को, नानी माँ को क्या परेशानी होगी? Can't sleep. Can't sleep. We all know it. Old age. You can't sleep. By the way, have you heard of it? By the age of 40, 50, this calcification starts. Melatonin धीरे धीरे कम होने लगता है. और
बिफोर द एज ऑफ 40 आप दिन के 8-9 घंटे 10 घंटे सोते थे। आपकी एज में तो आप कितना मस्त सोते हो आराम से। पोस्ट 40 मम्मी पापा की नींद कम हो गई है, 7-6 घंटे सोते हैं, फिर भी फ्रेश लगता है उनको। भाई थोड़ा सा कैल्सिफिकेशन हो चुका है पीनियल में और मेलाटोनिन कम हो गया है, तो नींद तो आ जाती है, लेकिन नींद ज्यादा मेंटेन नहीं होती है। 6-7 घंटे में अच्छी नींद हो जाती है। प्रॉब्लम है जब उम्र और बढ़ जाती है, नाना नानी की इतना ज्यादा कैल्सिफिकेशन होता है ना पीनियल का कि मेलाटोनिन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है एंड दे हैव सिवियर इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप। तो सर आपके उनको स्लीपिंग टैबलेट्स दोगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत एडिक्टिव है, स्लीपिंग टैबलेट नहीं देने का। तो आपके दादा दादी नाना नानी अगर उनको स्लीपिंग टैबलेट्स की आदत है ना, टेल देम प्लीज डोंट हैव स्लीपिंग टैबलेट्स, दे आर वेरी वेरी एडिक्टिव। ना तो खाते हैं आपके दादा दादी में कोई घर पे, इफ दे आर हैविंग alprazolam, trica or something anyway, anyone in the family, dada dadi nana nani having? Nahin? Achha, this is good, thank God. But if they're having sleeping pills, you may just tell them take melatonin tablets. Melatonin, like insulin, is now made with the help of bacteria. मैंने बताया था बैक्टीरिया से इंसुलिन बना सकते हो आप, तो ऐसे मेलाटोनिन भी बना रहे हैं। जीन पर इंसुलिन को बैक्टीरिया में डाल के मेलाटोनिन बनाया जा रहा है, और उसकी टैबलेट लेते हैं। मिलासेट करके टैबलेट आती है, एलनॉल टैबलेट आती है, और वो 3 मिलीग्राम की दे दो, दादाजी को नींद आएगी। नहीं हुई तो 5 मिलीग्राम की दे दो, नहीं हुई तो 10 मिलीग्राम की दे दो। एनी वो नेचुरल है, तो उससे नींद भी आ जाएगी, साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडिक्शन नहीं होगा। So that is the best thing to do. Please remember, pineal atrophies after old age. Okay. क्या रह गया था? And then demineralization of bones in females is observed after they lack menopause. This is due to lack of estrogen. Question number 158. Estrogen, I just said estrogen deficiency. नाइस, ये भी क्वेश्चन दिया है, ऑस्टियोपोरोसिस, तो 158 भी मार्क करना। और ये इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, दीस आर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट है। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। हाँ बेटा, बस ये खत्म ही हो गया, द लास्ट क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वी डोंट हैव एन इशू, द लास्ट पेज 162। What is the role of cortisol in calcium? Like I didn't get it. Sorry बेटा, कैल्शियम और cortisol का क्या रिलेशन? अरे हाँ वो समझा नहीं। हाँ यार, अरे थैंक यू बेटा। Anybody, what does cortisol got to do with calcium? TCT understood, PTH understood. What does cortisol got to do with calcium? Thank you, Arya. Somebody. So it acts on kidneys, right? So something to do with reabsorption. Yes, Arika, I'm giving you a Cadbury. Please answer. Sir, it acts on the renal tubule, so it will reabsorb calcium ions. Fantastic. NCRT. Do you all remember? It has cardiovascular and renal functions. And cortisol also helps in absorption of calcium from your nephrons. And how does it then maintain cardiovascular function? Anika, if you answer this, double Cadbury. Big Cadbury. Toblerone का एक बड़ा, एक Ferrero Rocher का पैकेट दूंगा. Give me the answer, Anika. At the moment, I'm anyway giving you a Toblerone because you answered something from NCRT. Maybe because it suppresses inflammation, so like it causes the constriction of blood vessels. Okay. Neuroendocrine.
So calcium may be helping in neural activity. Sorry, So madam. calcium may help in neural activity, like increases neural activity. So it may help in sympathetic nervous system, like, and so it increases the synatrial node, like something. Sorry. It affects the sympathetic nervous system. So, and it may help. How, beta? How? Like, what does calcium got to do with nervous system? So neural activity, it increases the neural activity. Neural activity is controlled by sodium and potassium. Sodium potassium होता है, calcium नहीं होता है. Calcium muscle में होता है. Muscle. Yeah, so it may help in sliding filament theory जो मैंने अभी आपको सिखाया. I knew it. Troponin, tropomyosin. The side how does it affect you? The heart muscle for like Sorry, beta? the heart muscles for like contraction. Contraction of heart muscle. By the way, does it directly contract heart muscle? नहीं. calcium Heart muscle आज ही हमने सीखा is controlled by electrical impulses from SA node and Purkinje fiber, atria SA node and ventricle Purkinje fiber. By the way, what is SA node? SA node is a small muscle. SA node ना उसको ये आपका word याद रखना circulation chapter. SA node is myogenic. Myo muscle. Genic genesis of electrical impulse. NCERT word circulation chapter. It's a myogenic tissue. And myogenic means it is a muscle producing electrical impulse. SA node. By the way, muscle contraction किससे होता है? अभी किया हमने calcium. And please remember, ये आपको बहुत high level पे हो जाएगा. One day Vishal sir will help you a little in this. बहुत ज़्यादा है. It's too deep at your level. You learn it in MBBS when we do ECG, electrocardiogram. देखा था PQRS wave होता है ऐसा टक 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 टक. तो सर उसमें SA node जब याद है ना आपने किया अभी SA node electrical impulse बनाता है. SA node muscle है उसमें electrical impulse बनता कैसे है? SA node muscle है ना उसका contraction relaxation is done by calcium, and calcium will help in muscle contraction of SA node, creating neuromuscular electrical impulses. That is the way it becomes pacemaker. And because cortisol, as Anika said, helps in calcium absorption from the kidney, that calcium will now help in maintaining SA node electrical activity. तो ये कब सबसे crucial है when you are having severe hypocalcemia. आपके बॉडी में इतना कम कैल्शियम है कि सर PTH, BTH, बोन सब कुछ अभी बचा नहीं है. And so this is severe. तो आपके cortisol से थोड़ा तो कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा. It will not go in the urine and it will help the heart to maintain SA node electrical activity. समझ आ रहा हो everybody? And sir, okay. फिलहाल इतना. I think this we will just go into some other logistics maybe later. Okay. So everybody clear with this? Fine. So please remember beautiful logistics we carried out. So yeah, all of you, I'm seeing the ones who persist are the ones who anyway persist. Yeah, the best of the best are still there. Good. Persisted. Got to do 4 hours. Appreciate it. Nice. So now